उन्हें अपने पैर की उंगलियों पर रखना होगा। यदि आप पूर्वानुमानित हो जाए। वेस्टइंडीज बनाम भारत तीसरा T20I 2023 जो खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम में। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज के कप्तान पॉवेल ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा धीमा विकेट लग रहा है। आखिरी गेम में होल्डर के घुटने में चोट लग गई थी, वो चूक गया। चेज अंदर आया। लोग उत्साहित हैं, हम इतिहास के द्वार पर हैं। उनके पास ऐसे गुणवत्तापूर्ण खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने पैर की उंगलियों पर रखना होगा। यदि आप पूर्वानुमानित हो जाएंगे तो वे आपको नष्ट कर देंगे। भारत के कप्तान हार्दिक ने कहा, पीछा करने में कोई आपत्ति नहीं। जाहिर तौर पर सतह को देखकर बल्लेबाजी करना पसंद करूंगा। धीमी हो सकती है, जो है सो है। पूरन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें आजमाने के बजाय चीजों को सरल रखना चाहेंगे। 2 बदलाव, यशस्वी ने पदार्पण किया, बिश्नोई की जगह कुलदीप आए। ईशान चूक गए। एजे की दोनों टीम की प्लेइंग 11। इंडिया की 11 शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, कप्तान संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, विकेटकीपर, रोवमैन पॉवेल, शिमरोन हेटमायर, रोमेरियो शेपर्ड, रोस्टन चेज, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ, ओबर्ड मैककोए। वेस्टइंडीज बनाम भारत तीसरा T20I 2023 जो खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम में। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज के कप्तान पॉवेल ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा धीमा विकेट लग रहा है। आखिरी गेम में होल्डर के घुटने में चोट लग गई थी, वो चूक गया। चेज अंदर आया। लोग उत्साहित हैं, हम इतिहास के द्वार पर हैं। उनके पास ऐसे गुणवत्तापूर्ण खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने पैर की उंगलियों पर रखना होगा। यदि आप पूर्वानुमानित हो जाएंगे तो वे आपको नष्ट कर देंगे। भारत के कप्तान हार्दिक ने कहा, पीछा करने में कोई आपत्ति नहीं। जाहिर तौर पर सतह को देखकर बल्लेबाजी करना पसंद करूंगा। धीमी हो सकती है, जो है सो है। पूरन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें आजमाने के बजाय चीजों को सरल रखना चाहेंगे। 2 बदलाव, यशस्वी ने पदार्पण किया, बिश्नोई की जगह कुलदीप आए। ईशान चूक गए। एजे की दोनों टीम की प्लेइंग 11। इंडिया की 11 शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, कप्तान संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, विकेटकीपर, रोवमैन पॉवेल, शिमरोन हेटमायर, रोमेरियो शेपर्ड, रोस्टन चेज, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ, ओबर्ड मैककोए। चाहूंगा कि पांड्या की कप्तानी कहीं ना कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। Absolutely, it's going to be very important because in the first T20 International, West Indies won the match by 4 wickets. In the second T20 International, West Indies again won the match by 2 wickets. So they haven't been big wins. They've been wins with small margins. But nevertheless, West Indies for the first time have beaten India in a T20 International bilateral series in 2 consecutive matches for the first time. And if they win today, or one more match in the remainder of the 3 matches, this will be a historic series as far as the turnaround or renaissance in West Indies cricket is concerned. बहुत महत्वपूर्ण है और अब से कुछ देर में दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विक्ट्री मिली है वेस्ट इंडीज को बहुत बड़ी नहीं है और उसके प्रमुख कारण ये भी हो सकते हैं कि उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो खासे अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए अब तक, चाहे ब्रैंडन किंग हो, जॉनसन चार्ल्स हो। प्रसन्ना, ब्रैंडन किंग ने 2 जो T20 मुकाबले अब तक हुए हैं उसमें 28 और 0 बनाए हैं, जबकि जॉनसन चार्ल्स सिर्फ 3 और 0 बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, काइल मेयर्स ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की है। 1 और 15 है उनके खाते में, हेटमायर के खाते में 10 और 22 है। किसी के भी खाते में कोई ठीक ठाक स्कोर नहीं नजर आ रहा है मुझे ऊपर के बल्लेबाजों में। Oh yes, and if you're wondering why the first ball hasn't been bowled of this third T20 International, there's a slight delay on the ground because the groundsmen are just getting the 30-yard circle remarked and getting that particular measurement exactly correct and ensuring that that 30-yard circle
has its presence in the way as per law that it is meant to be drawn, because the first 6 overs of a T20 international are power play overs, and not only that, after the 6 overs there are field restrictions which have to be followed. In test cricket you don't need a 30-yard circle, but in the limited overs format, whether it be one day international or T20, you need that 30-yard circle. So the groundsmen are just getting ready and ensuring that the 30-yard circle is rightly drawn, and that's why the small deal. और एक और बात है प्रसन्ना कि जो समय निर्धारित किया गया है 8 बजे से भारतीय समय अनुसार से मैच शुरू होगा पहली पारी, और उसको 9:30 तक खत्म हो जाना है। अगर आप उसमें डिले करेंगे तो वो रूल है कि एक्स्ट्रा फील्डर आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ सकता है आखिरी ओवर्स में, तो इसलिए भी 30 गज का ये जो दायरा है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। Absolutely, Ankit. It's very important to get that clearly and absolutely precisely evaluated, corrected, calculated, and that's why they're just getting that done. But that's what we've been saying here. The first T20 international, West Indies won that. The second T20 international, West Indies made a very, very strong statement, won that match. And now in this third T20 international, which way is this match going? Yashasvi Jaiswal today is making his T20 international debut for India, and our statistician Mukesh Kumar tells us that he has become the 105th player to represent India in T20 international. That's information coming to us from our statistician Mukesh Kumar. Yashasvi Jaiswal, 105th player. And now, Ankit, we are ready. Finally, the 30-yard circle has been marked. Hardik Pandya is ready with the new ball in hand. As the captain, he will have to lead from the front. बिल्कुल, और ब्रेंडन किंग स्ट्राइक ले रहे हैं। 38 मुकाबलों में 832 रन है उनके नाम, 68 उनका व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर है। उसके अलावा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे काइल मेयर्स हैं, 27 मुकाबलों में 498 रन, 2 रन बनाएंगे तो आज 500 रन पूरे हो सकते हैं उनके, 73 बेस्ट है उनका। हार्दिक चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंद अच्छा स्विंग मिला पहली गेंद पर, टप्पा पड़ के गेंद थोड़ी बाहर की ओर निकली, उसे ड्राइव किया गया लेकिन कवर पे रोक लिया गया गेंद को, रन की कोई संभावना नहीं। तो पहली गेंद के साथ ही स्विंग थोड़ा सा देखने को मिला है हार्दिक के गेंदों पे। Oh yes, absolutely. The ball just moving away from the right-handed Brendan King and nicely driven, but straight to the fielder. No run off the first ball. दूसरी गेंद के साथ अब तैयार होंगे। जैसा आप जानते हैं वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी कर रही है वेस्ट इंडीज की टीम। ये गेंद इस बार पैड लाइंस की ये गेंद ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे, थोड़ा उछाल ज्यादा देखने को मिला और गेंद पैड्स पे ऊपरी हिस्से पे आके लगी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद पे मिलेगा क्योंकि हार्दिक खुद गए, गेंद को फील किया वापस अपने बॉलिंग मार्क पे। तो एक चीज मैंने देखा है अलग तरह से हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में, अब वो स्विंग कराने के लिए भी जाने लगे हैं, क्योंकि अक्सर आप जब हार्दिक को शुरू में देखेंगे तो हिट द डेक गेंदबाजी करते थे प्रसन्न। Yes, that is a change that he has got in his armory, and looking at the upcoming one-day international World Cup that is to be played in India, his fitness is going to be of prime importance. बिल्कुल, तीसरी गेंद के साथ हार्दिक पांड्या चले। इस बार फिर से पैड लाइंस की इस गेंद को फ्लिक किया गया तेजी के साथ भागकर, इससे पहले कि गेंद को फील किया जाए। 1 रन पूरा कर लेंगे वहां और अब स्ट्राइक पर आएंगे काइल मेयर्स। ब्रेंडन किंग ने खाता खोला। अच्छा सीरीज अब तक उनके लिए नहीं रहा है, जैसा हम शुरू में भी बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज की टीम के जो शुरुआती बल्लेबाज हैं खासे बेहतर साबित नहीं हुए अब तक के इस पूरे T20 सीरीज में। ब्रेंडन किंग ने 28 बनाए थे पहले T20 मुकाबले में, लेकिन दूसरे में हार्दिक ने उनको पहले ही चलता कर दिया था। आज मौका है उनके पास और काइल मेयर्स के पास भी मौका है कि अच्छे तरह से बल्लेबाजी करें। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। हार्दिक पांड्या चले गयाना के इस बेहतरीन स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम, बाहरी किनारा लगा था वहां पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर रखा है वहां पर अर्शदीप को कप्तान हार्दिक ने, और गेंद सीधे उनके पास गई, रन की कोई संभावना नहीं। बड़ी अजीब सी फील्ड प्लेसमेंट लगाकर रखी है कप्तान हार्दिक पांड्या ने। आजकल हम ये देख रहे हैं थर्ड मैन रहता नहीं है, देखिए डायरेक्ट के अंदर खिलाड़ी रखा है हार्दिक ने। Yes, it's a fly slip sort of position, or a short third man as you may call it, or a deep gully as you may term it as, but that fielder is for a catching position. 5वीं गेंद के साथ चले। इस बार ये फुल लेन की गेंद ड्राइव कर दिया इसे बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन उस और फील्डर है डीप कवर में। इससे पहले कि गेंद को फील किया जाए, थ्रो किया जाए, 2 रन बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ काइल मेयर्स ने पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर अब 3, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोल लिया है। 2 पर अब मेयर्स पहुंच गए हैं और ये पारी का पहला ओवर फेंका जा रहा है। आज भारत ने अपनी टीम में 2 बदलाव किए। किशन के स्थान पे जायसवाल को मौका मिला है, जबकि
विश्नोई जिन्हें शामिल किया गया था कुलदीप यादव को, जब नेट्स में चोट आई थी उनकी उंगलियों में, उनको बाहर बैठा दिया गया। कुलदीप वापस आ गए हैं टीम में इस आखिरी गेंद पे, गेंद के ठीक पीछे गए, सुरक्षात्मक तरीके से वापस बॉलर की दिशा में खेला। रन की कोई संभावना नहीं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज 3 बिना नुकसान के। The first over really nicely bowled by Hardik Pandya, right on the money. Has made a very, very good start. Has bowled a very good line and bowled as per the field that he has set. He is the captain. He set the field and it was a very interesting field position, Ankit. If you see, there was a sweeper cover because that's the area where Kyle Myers drives it with great power and he hits that shot over the infield. So when you have a cover, backward point, mid-off, a backward point, and then a short third man and a slip. So you've packed the offside field with fielders. What he would do is that he would clear the infield from that power that he would generate over the offside. So this field placement right on the first ball that he played, he drove it towards sweeper cover and a couple of runs definitely saved. So a lot of planning, video analysis, strategies that have gone into this because India want to come back. बिल्कुल, और जैसे कि कप्तानी पे भी तो बहुत सारे सवाल उठे थे। The first ball, Arshdeep Singh, left arm over the wicket. Brendan King wanted to cut that, but good bounce there from Arshdeep Singh. King was beaten outside the off stump, nicely collected by the wicketkeeper Sanju Samson. Today, Ishan Kishan is not a part of the playing 11. So Sanju Samson, who's another wicketkeeper batter, he's today keeping wickets, and that is where it is going to be Sanju Samson who's playing as a wicketkeeper batter. Now, what is going to be interesting is what number does he bat today? Will he bat at 4? Will he bat at 5? That's what is the point of discussion. This time, once again, Arshdeep Singh bowls that way outside the off stump. It was King who wanted to drive that, but that's way outside the off stump. That's the first extra that comes up on the board, signaled by Nigel Digweed. He says that's a white ball. और आपने विकेट कीपिंग की बात की तो एक बात याद दिला दूं कि लगभग औसतन 8 गेंदें विकेट कीपर के पास आती हैं T20 क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली उनका योगदान बल्ले से बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि विकेट कीपिंग। वैसे है जरूरत तो विकेट कीपर के तौर पे है ही है उनकी इस वक्त टीम को। Let's see what Sanju Samson does today with the bat. If he does get a chance, nicely driven, but good fielding there at mid-on. Kuldeep Yadav saving a boundary for sure at mid-on. He has really worked hard on his fitness. He's generating good speed as well when he's bowling those variations. And with his fielding also, he's a very, very crucial player as far as India is concerned, whether it be the T20 international format or the one-day international format. Looking at the ODI World Cup that is coming up here in India, Kuldeep's fitness, Kuldeep Yadav's form, his wicket-taking ability that he displayed in the one-day internationals is going to be very, very important. Driven on the up, but straight to the fielder there at cover. Good shot, but good fielding there by Surya Kumar Yadav. And what we have seen so far, Ankit, in the first couple of overs is that Arshdeep Singh now and Hardik Pandya in the previous over are bowling a stump-to-stump line and bowling as per the field. बिल्कुल, और वो जो रूम जिसकी तलाश में हमेशा रहता है बल्लेबाज, कोशिश तो सबकी यही रहती है कि जब फील्डर्स दायरे के अंदर हों तो कुछ ऐसे हवाई स्ट्रोक्स खेले जाएं जिसपे चौके या छक्के उनके खाते में जुड़ जाए, तो उस तरह का रूम अब तक मिला नहीं है। This time, nicely driven. There's a fielder there at backward point. Dives. Won't be able to stop that. The fielder at sweeper cover. Yashasvi Jaiswal dives. But in vain. That's the first boundary of this third T20 international. Sweetly timed by Brendan King. The ball that was shot outside the off stump. Even the first ball he wanted to hit the same shot. He was beaten there. But this time, he waited that extra second. Saw that gap between backward point and the sweeper cover. And pierced it with great precision to get the first boundary. बिल्कुल, और ये तो तब है जैसे कि फील्ड प्लेसमेंट में आपने इस तरह से बदलाव कर लिए हैं कि थर्ड मैन का फील्डर दायरे के अंदर है और कवर का फील्डर आप डीप में रखे हुए हैं, तब इस तरह की संभावना बन रही है। A slow one this time from Arshdeep Singh, played towards mid-off to the fielder there at mid-on. Kuldeep Yadav cuts that in the mid-off area, but just a single taken. Mayers batting on 2, King batting on 6. West Indies are 9 without loss, 1 wide. That was bowled in this over by Arshdeep Singh. The knuckle ball that he just now bowled, a change in pace, and that is a very, very good variation that Arshdeep Singh has, especially when he bowls in the slog overs. Never
easy to get control when you're bowling that knuckleball. And Arshdeep Singh is definitely that young prospect which India are looking at as far as limited overs cricket is concerned. Let's see if he can make it to the One Day World Cup team. But here so far in the two matches that he has played in this T20 international series, he has done really well, bowled well, picked up wickets, and he has been in very, very good rhythm. Even in the first over that he has bowled, has conceded just 6 runs in the T20 international format. In the power play, that's a good over so far. Outside the off stump, defensively played by Kyle Mayers towards backward point, no run there. The second over comes to an end, and 2 overs bowled. Our senior scorer Sunil Dighe tells us West Indies are 9 without loss. Slowly, the 2 West Indian batters, Ankit, are settling in, and then slowly they will look to just explode and reach a very, very good score because they won the toss and they're batting first. बिल्कुल, और अभी पूरन अभी वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए हैं क्योंकि कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है वेस्ट इंडीज को। हमने देखा कि जो पिछला मुकाबला था हार्दिक ने जल्दी जल्दी 2 विकेटें ले ली थी, और अब देखिए कुछ इस तरह का परिवर्तन हमें मैदान पर दिखाई दे रहा है कि खुद कप्तान हार्दिक पांड्या अब गेंदबाजी के लिए वापस चले गए हैं और उन्होंने अक्षर पटेल के हाथ में गेंद थमा दी है, जिनको कि पहले मुकाबले में 2 ओवर कराया था उन्होंने, और 22 रन लगने के बाद दूसरे ओवर में दूसरे मुकाबले में ओवर ही नहीं दिया था। तीसरे मैच में आज शुरू में ही ओवर दिया और पहली गेंद को बैकफुट पे खेला, डीप कवर के रास्ते से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। Brilliantly timed that one from Brendan King off the back foot. There was a fielder there at extra cover inside the 30-yard circle, a fielder at long off as well, but off the back foot, power and timing, and he got that boundary with elegance. And the first ball of Akshar Patel goes for a boundary. दोबारा से महंगे साबित हो रहे हैं। अभी तक तो पहली गेंद पे ही चौका लग गया, लेकिन चलिए दूसरी गेंद पे वापसी की अक्षर पटेल ने। एक अच्छी फुल लेंथ की गेंद, सुरक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला गया, कवर्स पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन की कोई संभावना नहीं। तीसरी गेंद के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और इस बार पैड लाइंस की इस गेंद को फ्लिक किया ऑन साइड में, तेजी के साथ भाग पड़े रन लेने के लिए। 1 रन वहां पर पूरा कर लेंगे बल्लेबाज ब्रेंडन किंग, और काइल मेयर्स के पास स्ट्राइक आएगी। ये पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, और जो शुरू में 2 ओवर्स हुए हैं वो दोनों ही ओवर तेज गति के गेंदबाजों ने किए हैं। तो एक अच्छा मूव मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस विकेट पे जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि थोड़ा मदद है स्पिनर्स के लिए, तो ये जानते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल को गेंद दी, लेकिन फिर से महंगे साबित हुए। इस बार पैड लाइंस की इस गेंद को शानदार तरीके से घुटनों के बल बैठकर स्वीप कर दिया 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस चौके के साथ अब वेस्ट इंडीज का स्कोर 18 हो गया है बिना नुकसान के। This is bread and butter for Kyle Mayers because the fine leg inside the 30-yard circle, square leg inside the 30-yard circle, left arm spinner bowling left arm over the wicket, angling into the left-handed Kyle Mayers. All he had to do was just clear the infield behind square on the leg side and gets a boundary. इस बार एक बार फिर से पैड लाइंस पर भटकते हुए मिडिल स्टंप से गिरकर गेंद और लेग स्टंप की ओर निकल रही थी, उसे कलाइयों के सहारे खेलना चाहते थे, गेंद पैड पे लगी। इस बीच भागकर 1 रन पूरा कर गए, क्योंकि नजदीक में जो भी फील्डर्स हैं सिरे के ऊपर दिखाई अब दे रहे हैं, तो इसलिए मौका बना वहां मेयर्स के पास कि 1 रन के साथ छोर बदलने अपना। ब्रेंडन किंग स्ट्राइक लेंगे इस आखिरी गेंद के साथ। अक्षर पटेल की गेंद बाहरी किनारा लगा, वहां पे मिस क्यों कर गए, पूरी तरह से चूक गए स्ट्रोक खेलने में ब्रेंडन किंग। बाल बचे, एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद लेग स्टंप के ऊपर जिसे पुल करना चाहते थे, इतनी छोटी गेंद थी नहीं। किस्मत वाले रहे कि पहले स्ट्रोक खेल लिया, गेंद लेट से आई उनके बल्ले पे। प्रसन्ना, Yes, the ball came really slowly on to his back. Brendan King had almost completed his shot by the time the ball came. It was a short ball, and Brendan King now must be thinking that had he waited just that extra little second, he could have got a big one there, a boundary or a 6 for sure. But that is what King and Mayers will be discussing in between the overs, that just wait for an extra second because the ball is not coming on. Making in the first power play an indication of how the pitch is playing. Yuzvendra Chahal now getting ready to bowl his first over and the 4th over of the power play. 3 overs, West Indies 19 without loss. The first ball with the spin, Kyle Mayers has dispatched that
over square leg for a towering six. That is the 28th six of this T20 International Series. And once again, with the spin, he has accepted that gift gleefully. जिस तरह से गेंद पड़कर थोड़ी अंदर की तरफ आई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और सही लेंथ पिक किया, उसके बाद उछाल कर खेला मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। जबकि एक बात और है प्रसन्ना कि जब भी हमने देखा है स्पिनर्स को हार्दिक पांड्या ने मिड ओवर्स में लगाया या पावर प्ले में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बड़े महंगे साबित हुए हैं। आखिरी ओवर में पिछले पावर प्ले में 14, पहले T20 के मैच में अक्षर पटेल को उन्होंने बॉल दी थी और दूसरे T20 में उन्होंने रवि बिश्नोई से गेंदबाजी कराई। आखिरी ओवर वो जो पावर प्ले का होता है उसमें 18 रन आए थे, पूरन ने ताबड़तोड़ वो रन बनाए थे। अब ये तो समझ से परे है। Yes, and this is the fourth over, and that six that Kyle Mayers hit over square leg has resulted in a change of ball. What happened was he hit that over square leg, and here there is a change of ball because the ball may have been damaged or may have just gone into that area where it would have lost shape or has lost that original shape that it had. So it has been changed in the fourth over of this third T20 International. So it has to be the ball which has comparable wear and tear. It has to be as identical as it can be. This time a short ball off the back foot, nicely played with soft hands towards mid-wicket by Kyle Mayers, and he gets that single. This is very, very good cricket. A six followed by a single, because on this pitch all you need is once you set in, you need to make it big, because it's not going to be easy for the new batter to get going immediately on this kind of a pitch, because already in the fourth over that we are seeing here, there are two spinners that have been brought into play by Hardik Pandya. Yashasvi Jaiswal once again getting ready to bowl right arm over the wicket to the right-handed Brendan King. This time going for the big one. It has beaten the batter, beaten the wicketkeeper, and it will be signalled as a boundary. So it hasn't been given as byes. It has been given as a boundary for off the bat. It is a ball that was tossed up. He induced the batter to go for the big one. It was Brendan King who missed the ball completely. The ball went through his bat and pad, and Sanju Samson couldn't collect it, and that's a boundary. बिल्कुल, वो 8 गेंदें ही आती हैं पीछे, उसमें से एक गेंद ये थी। तो इतना मुश्किल है ये अपने आप में एक विकेट कीपर के तौर पे, क्योंकि आपको मौके ही आते हैं वहां। This time a short ball off the back foot, played defensively, straight back to the bowler. No run taken. Chahal, this T20 International Series, has bowled really well, and he's got those wickets of the fuller length that he has bowled, the 4-meter length that he has bowled. He's got 3 wickets in that, and good length, he's got 1 wicket. So 4 wickets in the 2 matches. He's been a very, very good bowler. This time the ball keeps a little low. It is Brendan King who wanted to pull that, and there was an appeal from Yuzvendra Chahal, but it was more out of hope than conviction. It appeared to be going down the leg side, and hence they did not persist with that appeal. But the West Indies are off to a flying start. They're off to 30 in the fourth over. Bright sunshine here at the National Stadium, Providence, Guyana. This time once again a flatter trajectory, a shorter ball off the back foot, played defensively towards mid-on. No run. 4 overs have been bowled. This over of Chahal conceded 11 runs, an expensive over there. 4 overs bowled. Our scorer Sunil Dighe tells us West Indies winning the toss, electing to bat first, are 30 without loss on this pitch. Ankit, it's a decent start. कमाल की शुरुआत हुई है। ब्रेंडन किंग 15 पर खेल रहे हैं, काइल मेयर्स ने 14 रन बनाए हैं और 1 छक्का 1 चौका काइल मेयर्स ने लगाए हैं। 3 चौके अब तक अपने पारी में ब्रेंडन किंग लगा चुके हैं। दोनों ही फास्ट बॉलर्स के साथ हार्दिक पांड्या ने पारी की शुरुआत की थी। पहले खुद आए बॉलिंग करने के लिए, एक छोर से अर्शदीप को गेंद दी, लेकिन उसके बाद पहले परिवर्तन के तौर पे अक्षर पटेल को लगाया वहां। और इस बीच अब नए ओवर की शुरुआत करते हुए अक्षर पटेल पहली गेंद, जिस गेंद को पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके मेयर्स वहां, और अब दूसरी गेंद के साथ तैयार होंगे अक्षर पटेल। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज मेयर्स के लिए। इस बार ये फुल लेंथ की गेंद उछाल कर खेलना चाहते थे, बढ़िया टर्न देखने को मिला प्रसन्ना इस गेंद पर। गेंद टर्न होकर अंदर की तरफ आई और बैट और पैड में जो गैप था उसको भेदती हुई जाके शरीर पे लगी। कोई नुकसान नहीं वेस्ट इंडीज को, क्योंकि गेंद लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी। लेग बिफोर का भी वहां कोई मौका बन नहीं रहा था। पारी का 5वां ओवर चल रहा है और अब फील्ड में परिवर्तन हम देख रहे हैं कि
लॉन्ग ऑन पे जो फील्डर था उसको दायरे के अंदर बुला लिया गया है मिड ऑन पे, और 2 फील्डर अभी भी ऑन साइड में। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उस पर फील्डर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है, पूरी तरह से गेंद के ऊपर नहीं गए। अंत समय में गेंद को फ्लिक किया, कलाइयों का भी इस्तेमाल किया, और ये छोटी गेंद थी। अक्षर ने जैसे ही देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, गेंद को थोड़ा छोटा किया, और वहां पर मेयर्स ने जैसे ही देखा कि अब तो पहुंच नहीं पाएंगे, किसी तरह से उसे कलाइयों के सहारे मोड़ा बाद में, और इससे पहले डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद फील्ड हो, 1 रन बनाने का मौका। ब्रेंडन किंग तैयार होंगे राउंड द विकेट उनके लिए। शॉर्ट गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को पंच किया, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में अक्षर पटेल ने डाइव लगाकर गेंद को रोका और रन की किसी संभावना को समाप्त कर दिया। ये 5वां ओवर चल रहा, अब तक 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर से और सिर्फ 1 रन आया है। कसी हुई गेंदबाजी अब तक, पहले ओवर में 10 रन देने के बाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये शॉर्ट गेंद बैकफुट पे कट करना चाहते थे, गेंद बहुत नीचे रही। भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है ये, क्योंकि भारत को बाद में बल्लेबाजी करनी है, और इस विकेट में जितना हम स्पिन देख पा रहे हैं उससे भी ज्यादा हम ये देख रहे हैं गेंद रुक कर आ रही है, बीच बीच में गेंदें नीचे रह रही हैं। इस बीच ये आखिरी गेंद, इस बार बैकफुट पे जाके इस गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए। 5 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 32 बिना नुकसान के। 1 over to go of the first power play. The first power play of 6 overs, 5 overs, 32 for no loss. Brendan King and Kyle Mayers are batting well, but this over of Akshay Patel considered just 2 runs, and the angle that he bowls from left arm around the wicket to the right-handed batter, and it's a round arm action. With the round arm action, he generates that angle. The ball doesn't turn away from the right-handed batter, it angles into the right-handed batter, and that is a very, very good line and length to bowl, especially on this wicket, because Akshat Patel is known to bowl a stump to stump line. You miss, I hit. That's the length, that's the line that he bowls. And so far in the first 2 overs that he has bowled, yes, he's conceded some runs, but this over, the previous over that he bowled, was very well bowled. The ball kept low also a couple of times, and as you rightly said, Ankit, the Indian batters must be thinking what is going to happen when they chase. This time a short ball rocks on to the back foot. Brendan King and hits that in the mid-wicket area. 1 bounce into the advertising hoardings for a boundary. Brendan King is looking to attack Yuzvendra Chahal, not letting him settle, and that is a very, very good strategy to have, and so far it is working really well. बिल्कुल, और गेंद के लेंथ को बहुत अच्छे से पिक किया उन्होंने। ये शॉर्ट गेंद थी और कमाल की टाइमिंग के साथ बैकफुट पे पुल किया उन्होंने। This time, once again, a short ball on the pads. Nicely played towards deep mid-wicket for a single. A boundary followed by a single. 37 that the West Indies move on to. King batting on 21. Mayers batting on 15. Yuzvendra Chahal bowling his second over has conceded 16 runs so far. Akshar Patel is bowling. So 2 spinners bowling in tandem in the power play. The 6 overs power play. There have been 4 overs that have been bowled by the spinners. The leg spinner Chahal now bowling right arm over the wicket. Once again, a flatter trajectory. A ball that moves, that goes away from the left-handed batter. A flipper, a flatter trajectory that he bowls at. And there's one chance that Sanju Samson must be thinking in the previous over of Yuzvendra Chahal, where he tossed the ball up. Brendan King went for the big one. He was beaten all ends up, but Sanju Samson couldn't quite collect it. Otherwise, that would have been an easy stumping. This time, crashed onto the pads. Not quite able to read the length there was Kyle Mayers just hitting the pads, no run taken. Sanju Samson must be thinking it's never easy when you are playing the matches as a batter, and then because of a team change you are told to keep wickets in international cricket. It's not easy. It is not an easy job, especially for the spinners, where you have to be really close to the stumps and then gauge the spin and the turn and the bounce as well. This time hit towards mid-wicket on a couple of bounces. There's a fielder there at deep mid-wicket with the spin. Kyle Mayers hits that ball and gets just a single. Scoreboard moves on to 38. The current run rate of 6.51 that the West Indies openers are batting at. It's a healthy run rate. Yes, they will want to go towards that 45 run mark, but on this pitch, it is a very, very good start. Last ball of the power play. This time the ball comes really slowly out of the bat, keeps low as well, opens the face of the bat. King plays that towards backward point, no run taken, and that's the end of the power play overs. And our scorer Sunil Dighe tells us that at the end of the power play, West Indies winning the toss, electing to bat first with Brendan King and Kyle Mayers at the crease. They're off to a steady start, 38 without loss.
बिल्कुल, तो पावर प्ले समाप्त हो गया है और जैसा आप जानते हैं वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर निर्णय लिया था कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। खुश होंगे उनके कप्तान रॉबिन पॉवेल, कप्तान है टीम के, और हार्दिक पांड्या की टीम ये जानते हुए कि 2-0 से इस सीरीज में पीछे है, उनके लिए बहुत अहम है कि इस मुकाबले को जीते। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है पावर प्ले में ठीक ठाक शुरुआत वेस्ट इंडीज की हुई है, लेकिन अब परिवर्तन के तौर पे अक्षर पटेल के स्थान पे कुलदीप यादव को कप्तान ने मौका दिया है। 30 मुकाबलों में 47 विकेट है उनके नाम। कुलदीप चले बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद टर्न के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया उधर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। Brilliantly hit. That was timing personified. There was a fielder there at deep mid wicket, a fielder at long gone, off the back foot against the turn. It was so sweetly timed that it pierced the two fielders on the boundary line with great ease. Mayers and King are looking really good on this pitch. बिल्कुल, इसी के साथ 20 पे मेयर साहब पहुंच गए दूसरी गेंद के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद पैड लाइंस पे, गेंद उछली जरूर है हवा में लेकिन पूरी तरह से चूक गए थे। स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टंप पे पिच होके ये गेंद और बाहर की ओर निकल रही थी लेकिन पूरी तरह से चूके और गेंद थोड़ा रुक कर आई, वहीं सामने लुढ़क गई गेंद, रन की कोई संभावना नहीं। कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार 2 भारतीय ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 5-5 विकेट लिए हैं इस प्रारूप में। इस बार ये शॉर्ट गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को पुल किया, लेकिन इस बार फील्डर है डीप मिड विकेट पे, 1 रन इस गेंद पर मिला वहां। कुलदीप की अच्छी गेंदबाजी हुई है अब तक इस सीरीज में। 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया था पहले T20 में, और उसके अलावा जो वनडे की सीरीज हुई थी, वनडे मैचेस की, उसमें 4 विकेट लिया था पहले ही वनडे में। तीनों ही प्रारूप में इन्होंने 5-5 विकेट लिए हैं, टेस्ट मैचेस हो, वनडेज हो या T20 हो। कुलदीप यादव चले बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद उछाल कर खेला है, गेंद बहुत ऊंची हवा में चली गई है। ब्रेंडन किंग के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का। That is brilliantly hit by Brendan King with the spin. He danced down the track, a couple of steps that he took, reached the pitch of the ball, and then he hits that sweetly. That's 6 over long gone, 87 meters long. That is a towering 6 of the bat of Brendan King. West Indies move on to 49 without loss. कुलदीप यादव, ये गेंद पैड्स पे लगी और जोरदार अपील, लेकिन शायद गेंद में उछाल ज्यादा और किसी तरह का कोई वहां लेग बिफोर का मामला नहीं बन रहा था। कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा खासा टर्न उन्हें मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, सदी हुई शुरुआत, लगभग 50 के आसपास अब वेस्ट इंडीज की टीम पहुंच रही है और अब अपने आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में खासा महंगा रहा है अब तक का ये स्पेल। कुलदीप यादव का पहले ही ओवर है और इस ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन वेस्ट इंडीज ने बना लिए। ये लेग स्टंप पे भटकती हुई गेंद को स्वीप किया था वहां, इससे पहले गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन मिला, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं और कोई भी विकेट का नुकसान अभी उन्हें नहीं हुआ है। That's a very good start from the right-hand, left-hand combination of the West Indian team. Brendan King and Kyle Mayers have put up a half-century run opening stand, winning the toss, batting first. They have proven that so far it has been a very, very good decision. Mayers has contributed 21, King has contributed 28, and there has been one white ball that was bowled by Arshdeep Singh in the very first over that he bowled, which was the second over of this third T20 international. First over was bowled by Hardik Pandya, the second by Arshdeep Singh, but after that we're seeing all spinners in action. Akshar Patel bowls that left arm round the wicket, a tossed up delivery, drives, that is Brendan King, he drives that towards sweeper cover, gets an easy single. Now that King and Mayers have set, they are now in complete knowledge of how the pitch is going to play. One of them, or maybe both of them, will now look to attack because they now need to press on the accelerator. Flatter trajectory this time. Once again, the ball that moves away
from the left-handed Kyle Mayers. He just opens the face of the bat, plays that towards backward point. No run taken, nicely fielded by Kuldeep Yadav. This time, once again, a flatter trajectory. This time, smartly played by Kyle Mayers. He waited, and then when the ball came onto the bat, he hit that over the infield towards the deep extra cover boundary. There was a fielder there at sweeper cover, there was a fielder there at long off, and the key aspect to this shot was because he waited with such patience, he got that ball exactly where he wanted. बिल्कुल, और राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए अक्षर पटेल। तो वहां से इस बार ये गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई है। देखना है क्या उसके पीछे खिलाड़ी उसके नीचे पहुंच पा रहे हैं या नहीं। जी हां, अर्शदीप ने यह कैच पकड़ लिया और भारत को पहली सफलता मिल गई प्रसन्ना। That's a big wicket. That is a big wicket. Akshar Patel gets that wicket as he was bowling that line, left arm round the wicket. He bowled that where it was on the middle and leg stump. It was Kyle Mayers who went for the big one. It took the top edge, and Arshdeep Singh, who was stationed at deep square leg, ran in a few yards and judges that to a nicety. And that's the breakthrough that India were looking for. Kyle Mayers has to walk back, scored 25 runs in 20 balls with 3 boundaries and 1 6. Akshar Patel gives that the first breakthrough for Team India. And as we were discussing, Ankit, something was going to happen. Either of the batters or both the batters were going to attack because they had got the foundation, they had got the platform, and in the pursuit of increasing the run rate, going for the big shots, Kyle Mayers has returned back to the pavilion. बिल्कुल, और उसके पहले भी चौका लगा चुके थे तो शायद सिंगल्स के लिए भी देख सकते थे, लेकिन विकेट इतने उनके पास बचे हैं और ओवर सब धीरे धीरे, सिर्फ इसके बाद 12 ओवर का खेल और बचा है। पूरे के पूरे 10 बल्लेबाज उनके ऐसे हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो उनका स्वाभाविक था कि वो इस स्ट्रोक के लिए जाएंगे। और मैं कहूंगा अच्छी कप्तानी हार्दिक पांड्या की कि उस तरीके से उन्होंने उनको गेंदबाजी करने के लिए कहा, राउंड द विकेट आप गेंदबाजी करिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जहां एंगल और आसान बनता है। Yes, so far it has been a bowling performance where it has been all spinners on display, because Akshar Patel is bowling his third over. Kuldeep Yadav has bowled. Yuzvendra Chahal has bowled. This time the new batter, Johnson Charles, flighted delivery. This time the ball, because it was flighted, turns away from the right-handed batter and he was beaten. All ends up. There's a slip in place as well. Excellent captaincy here from Hardik Pandya. This time down the leg side. Well collected by Sanju Samson. He flicks the bails as well. But this collection and the flicking of bails will definitely add to the confidence of Sanju Samson, because it's a good feel to have. It's always a good feel to collect the ball, but signal to wide. So that's the second extra conceded by the Indian team. This time right on the money, on the middle stump, defensively played by Charles. A good over, a wicket-taking over there comes to an end. 8 overs have been bowled. West Indies, after winning the toss, electing to bat first, have lost 1 wicket, that of Kyle Mayers, who was out on 25, and he was scalped by Akshar Patel. 8 overs bowled, 56 for 1 are the West Indies. बिल्कुल, और गणित के हिसाब से रनों की औसत 7 है। बहुत सीधी गणित है यहाँ पर, 8 सते 56, तो 7 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन इसी तरह से बल्लेबाजी होगी तो 140 के आसपास वेस्ट इंडीज बना पाएगी, और अब तक के आप स्थितियों को मिलाएंगे तो दोनों ही T20 मुकाबलों में लगभग 150 के ही आसपास स्कोर हुए हैं। तो कुल मिला के ठीक ठाक शुरुआत कही जा सकती है। और एक छोर से स्पिनर को हटा रहे हैं तो दूसरे छोर से स्पिनर्स को ही रख रहे हैं हार्दिक पांड्या। चहल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद उछाल कर खेला इस गेंद को, उस ओर फील्डर है लॉन्ग ऑन पर और 1 ही रन मिलेगा। अक्षर पटेल खुद मौजूद है वहां पर और ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के दोनों ही बल्लेबाज हैं। ब्रेंडन किंग 20 पर हैं और अभी बल्लेबाजी करने के लिए जॉनसन चार्ल्स आए हैं। किंग ने लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेलने की मंशा जाहिर की थी इस गेंद पे और 1 रन मिला। अब जॉनसन चार्ल्स स्ट्राइक लेंगे। 30 की रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रेंडन किंग। और अब से कुछ देर पहले आउट हुए काइल मेयर्स। अक्षर पटेल ने भारत को पहली सफलता दिलाई। चहल का ये तीसरा ओवर है। अब तक 18 रन दे चुके हैं दूसरे गेंद के साथ। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। इस बार फुल लेंथ की गेंद के ठीक पीछे गए, कलाइयों के सहारे मोड़ा इस गेंद को। और इससे पहले कि लॉन्ग ऑन से फिर से अक्षर पटेल गेंद को फील्ड करें, 1 रन बनाने का मौका। अक्सर हम देख रहे हैं ना कि ये फुल लेंथ की गेंद थी, फिर भी पीछे जाके खेलने की कोशिश हो रही है प्रसन्ना। शायद स्पिन को पूरी तरह से परखना चाह रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। That's the talk in the dugout on the speed, the pace of this pitch, and that is why that difference in the footwork. क्योंकि अगर यही मैच
इस बीच अगली गेंद उछाल कर खेला, इस बार डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को इससे पहले फील्ड किया जाए, 1 रन मिलेगा। प्रसन्ना में यही कह रहा था कि अगर अमूमन हम ये देखते हैं कि बल्लेबाज अपना दाहिना पैर बाएं हाथ का बल्लेबाज निकालता है या दाहिना हाथ का बायां पैर अपना निकालता है, फ्लिक के अंदाज में खेलता है, लेकिन यहाँ उस तरह से स्ट्रोक्स नहीं खेले जा रहे हैं, गेंद को आने दे रहे हैं और उसके बाद ज्यादातर पुल या स्लॉक कर रहे हैं बल्लेबाज। And that's the trick to play on this pitch. If you can just wait for that extra little second, you will get that ball where you want it to go. That is flighted. Went for the paddle sweep, Johnson Charles. And when he went for the paddle sweep, he wanted that ball to go towards fine leg. But Ankit, it has gone over the first slip towards the short third man area and in the end signaled as a leg bye. बिल्कुल पूरी तरह से चूक गए, उन्हें समझ नहीं आया। हालांकि कहीं अगर ये गेंद सूर्य कुमार यादव स्लिप्स में लपक लेते तो फिर कैच के लिए अपील करते जरूर, लेकिन वहां गेंद उनके ऊपर से निकल गई। लंबी छलांग लगाई उन्होंने किसी तरह से लपकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। अब तक इस ओवर में 4 गेंदें हुई हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। चहल चले इस बार पैड लाइंस की गेंद स्वीप करना चाहते थे, फिर से चूके। स्पिन बहुत मिल रहा है इस विकेट में, इतना आसान नहीं है स्ट्रोक खेलना। और खासतौर पे जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं, प्रसन्ना पहले भी कह चुके हैं, जो सेट है उन्हीं को रन बनाना पड़ेगा। नए बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं है। जॉनसन चार्ल्स आए हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, लेकिन पूरन जब से टीम में है तो वो विकेट कीपिंग का कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। आखिरी गेंद के साथ चहल चले, इस बार स्लॉक स्वीप खेलते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर इस स्ट्रोक को, और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बहुत छोटी बाउंड्री है वहां पे प्रसन्ना। Yes, 66, 67 on either sides here at Providence in Guyana, but that's 6, the 30th 6 of the third T20 International. So even though these pitches haven't seen big scores like 180, 200, 225, but still on an average about 10 sixes in a match. Here it's still the first innings, another innings to go and 30 sixes. But this one, where I think Johnson Charles has decided that when it's going to be the spinners, he's going to employ that sweep shot, and this time he connected really well. It went over the deep square leg area for a 6. कोई उस तरह के कन्वेंशनल स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे हैं जैसे अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाज खेलते हैं। Akshar Patel bowling the 10th over. This time strays down the leg side. Played off his pads towards short fine leg by Brendan King. No run. Excellent feeling there at short fine leg. Both now the two right-handed batters. When Kyle Mayers was there, never easy for the bowlers when there's a left-hand, right-hand combination. But now both the right-handers at the crease. Nicely played towards short mid-wicket area by Brendan King, and a good early call makes that single easily possible. But now the spinners of India are just pulling it back. Yes, there have been those couple of shots that have gone in, but here the spinners are bowling really well and bowling in tandem. 3 spinners that India are playing with today. This time off the back foot, off the outside edge. The first slip will not be able to reach there, and the backward point. Yuzvendra Chahal also will not be able to chase that down. A streaky boundary, a lucky boundary off the outside edge, but a boundary nevertheless. बिल्कुल, और पिछली 2 गेंदों पे 10 रन बना चुके हैं जॉनसन चार्ल्स, और वही मैं कह भी रहा था कि कोई कन्वेंशनल स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बस बल्ला चला रहे हैं और जैसे भी है वो रन्स तो आ रहे हैं उनकी टीम के लिए। Because Akshar Patel also bowls with a good pace. This time the ball pitches, bounces and turns as well away from the right-handed Johnson Charles, and it opened him up literally where he turned towards the leg side and the ball landed safely into the hands of the wicketkeeper Sanju Samson. This time once again just playing inside the line of the ball, nicely collected by the wicketkeeper Sanju Samson. Good field placement. That slip is going to be in play because the outside edge, if it takes the outside edge, then that slip fielder will come into action. Shubman Gill, the fielder there at a first slip, this time on the middle and leg, nicely played towards mid-wicket by Charles, gets a single. 10 overs have been bowled, and at the end of 10 overs, King and Charles are then taking this course ahead exactly at the halfway stage, Ankit, after winning the toss, electing to bat first after getting a solid foundation of 55 runs for the first wicket, where Kyle Mayers got out going for that big shot exactly at the halfway stage. 10 overs have been bowled and West Indies are 73 for 1. But what the West Indian team, Ankit, will be thinking is they have Roman Powell, but they have 2 attacking left-handed batters, Shimron Hetmeyer and the player who is in the form of his life, Nicholas.
पुरन, बिल्कुल निकोलस पुरन सीरीज के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 67 रन की पारी उन्होंने खेली थी इससे पहले पिछले मुकाबले में, और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। उससे पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 41 रन बनाए थे। तो उनके पास तो बल्लेबाजी की बड़ी अच्छी कला है, और इससे पहले उन दोनों मैच से पहले जाएंगे निकोलस पुरन के बारे में, तो अमेरिका से सेंचुरी लगाकर आए हैं। 137 बनाए थे 55 बॉल में। तो आक्रामक बल्लेबाज हैं, स्पिनर्स पे टूट कर पड़ते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है कि मुकेश कुमार को आपने टीम में शामिल किया है आज, अक्षर पटेल से बॉलिंग कराए जा रहे हैं, 10 ओवर हो गया है, अर्शदीप हार्दिक खुद बॉलिंग कर सकते हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि क्या प्लान है हार्दिक पांड्या की। Yes, and we are discussing this because it's drinks time in Guyana. 10 overs have been bowled, so the players are just having a nice little breather when the sun is beating down at the National Stadium, Providence in Guyana. 10 overs have been bowled, and as Ankit was saying that yes, India have that firepower, but currently they are employing 3 spinners, and 3 spinners who are bowling: Kuldeep Yadav, Akshar Patel and Yuzvendra Chahal. And at the moment it has been Akshar Patel who has been the wicket taking bowler. The 3 spinners bowling in tandem, Arshdeep Singh and Hardik Pandya, have bowled only 1 over each, and Mukesh Kumar is yet to bowl. Mukesh Kumar is that player who has made his debut in all 3 formats on this very tour of West Indies, exactly like T. Natarajan had done when India toured Australia in that historic win in the Border Gavaskar Trophy. So this has been a special tour for Mukesh Kumar as well, and he will remember this for ages and years to come. बिल्कुल, कुल 14 दिनों में उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप में अपना डेब्यू कर लिया था। जैसा हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, तो अक्षर पटेल का कोटा समाप्त हो गया है। 4 ओवर में 24 रन देके उन्होंने 1 विकेट लिया है। इस बीच कुलदीप यादव एक नए ओवर की शुरुआत करते हुए और पहली ही गेंद पे बल्ला चलाया जॉनसन चार्ल्स ने, जो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, स्लॉग कर रहे हैं, उसी तरह से कुछ ये स्ट्रोक खेला, लेकिन पूरी तरह से चूके। गेंद और बल्ले के बीच कहीं कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर से भी गेंद छूटी वहां, और इस दौरान मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर कुलदीप यादव। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है, और अब ब्रैंडन किंग स्ट्राइक लेंगे 32 की रन संख्या पर। कुलदीप चले, इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप की गेंद, बैकफुट पे जाके कट किया इस गेंद को, इससे पहले कि डीप कवर से गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन बनाने का मौका। एक और दिलचस्प बात है प्रसन्ना कि जब जॉनसन चार्ल्स आ रहे हैं वो तो बल्ला भाज रहे हैं, उनके लिए स्लिप रखा है हार्दिक ने, और जब ब्रैंडन किंग बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके लिए कोई स्लिप नहीं। Yes, I think Charles is just getting beaten outside the off stump, and that's why that slip when he is batting. इस बार ये गेंद पैड्स पे लगी, लेकिन फिर से वही उछाल ज्यादा इस गेंद पे, कोई नुकसान नहीं। वरना इस तरह से जब भी कुछ होता है तो गेंदबाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं लेग बिफोर का मामला तो ना बन रहा है। 3 गेंदें इस ओवर से हुई हैं, सिर्फ 1 रन आए हैं। 10 ओवर के बाद स्कोर था 74, और इस बीच ये गेंद अच्छा टर्न देखने को मिला। इस गेंद पर भी 2 रन आए इस ओवर में। 10 ओवर के बाद स्कोर 73 था, जैसे हमारे स्कोरर बता रहे हैं सुनील। और कुलदीप जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इनकी गेंदों में न केवल टर्न है, बल्कि ये देखिए किस तरह से गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पे लग के उछली थी। वहां पर नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं था, वरना मौका बन सकता था। इस बार स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए हैं। जोरदार अपील, और अंपायर ने निर्णय दिया है कि आउट नहीं है, ये नॉट आउट का निर्णय आया है। आपको क्या लगता है प्रसन्ना? Yes, it's a close call. 8 seconds to go for the decision review system, DRS. Hardik Pandya with his hands at the back. Here with 1 second to go, he has gone for the DRS, and that is now where everything will be brought into action. The third umpire is Leslie Reifer. Leslie Reifer will now look at all the angles, and then he will tell us which way is that decision going. What we need to remember, Ankit, is that the original decision is not out. बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से ये होना चाहिए हमारे पास कि गेंद जाके स्टंप्स पे बिल्कुल इस तरह से टकराए, कोई हिस्सा गेंद का छू ना रहा हो, बल्कि पूरी तरह से गेंद लगेगी, तब जाके वो निर्णय बदला जाएगा। बॉल ट्रैकिंग देखना पड़ेगा, और अल्ट्रा एज सबसे पहले देखते हैं, तो वहां से कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मॉनिटर पर हमें कि गेंद ने बल्ले का कोई संपर्क लिया है। तो अब जो आखिरी बचता है यहाँ पर ऑप्शन, वो है बॉल ट्रैकिंग का, और वहां से देखना पड़ेगा क्या ये आउट है या नहीं। बॉल ट्रैकिंग मॉनिटर पर अब दिखाई जा रही है हमारे लिए, और उसमें साफ दिख रहा है कि गेंद जाके स्टंप्स पे लग रही थी। तो
इस तरह से भारत को दूसरी सफलता मिल गई है और कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में भारत को वापसी कराई है उन्होंने भारतीय टीम की, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स जो अच्छे लग रहे थे वापस जा रहे हैं 12 रन बनाकर. And Kuldeep Yadav must be given full marks for this because he convinced the captain Hardik Pandya in consultation with Sanju Samson to go for that review, and the review has been retained because it's a successful review that India have taken. Johnson Charles will have to walk back. LBW of the bowling of Kuldeep Yadav out on 12 in 14 balls that he faced. The original decision when Johnson Charles went for that sweep, the original decision was not out. That is where Kuldeep Yadav just had a quick word with Sanju Samson, then looked towards Hardik Pandya, who was looking as calm, as unaffected as it can be. It didn't look that he'll take the DRS. With 1 second to go, he took the DRS, and it is a very, very good decision to go with the DRS because the review has been successful and West Indies have now lost the second wicket, and now the big man walks on to the crease. निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. 78 मुकाबलों में उनके 1594 रन हैं. 74 उनका सर्वाधिक स्कोर है T20 में. बहुत ज्यादा मौके मिलते नहीं हैं क्योंकि वो निचले क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके खाते में शतक नहीं है, वरना यहाँ पे शतक जरूर होता. जिस तरह की ये गेंद थी, पिच बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर हुई थी, वहां से बिल्कुल सीधी निकल गई दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और पूरी तरह से चूक गए. घुटनों के बल बैठ के स्लॉग स्वीप करना चाहते थे. पूरन ने पहली ही गेंद को स्वीप किया है और इससे पहले कि चहल उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्ड करे, थ्रो करे वहां संजू के दस्ताने में, 1 रन बनाने का मौका. इस आखिरी गेंद पर 1 रन आया. 76 2 विकेट के नुकसान पे वेस्ट इंडीज. ब्रेंडन किंग 33 पे खेल रहे हैं. पूरन ने अपना खाता खोला है अभी और इस ओवर से 3 रन आए हैं प्रसन्ना. तो अच्छी गेंदबाजी कुलदीप ने इस स्पेल में तो करके दिखाई है. Kuldeep Yadav has been in very good form. We saw him in the one-day series as well. In the first match that he bowled, he picked up 4 wickets, conceded just 6 runs. So right from that first one-day international, he has been in very good rhythm, and he has got that good rhythm here in this T20 international series as well. And here, when he is bowling with great control. He is bowling with great rhythm, and the pace that he is bowling at is absolutely perfect on this particular pitch, and that is why he has been in very good form, where he has troubled the batters. The bowling change now is going to be Hardik Pandya, who has got himself into the attack. He bowled the very first over of this third T20 international, and now getting ready to bowl his second over and the 12th over of the innings. The current run rate that West Indies are batting at is 6.91. A backward point cover, mid-off and short mid-wicket. The 4 fielders inside the 30-yard circle. Nicholas Pooran, when we say big man, big in stature, because the kind of form that he has been in, and as you were saying, Ankit, that knock where he just hit those sixes for fun in that Major League Cricket final where Mumbai Indians, New York were crowned the inaugural champions of the Major League Cricket, which was played in the United States of America. And after that, in this T20 international series as well, even in the previous match that we saw him, he was batting on a completely different pitch, and here again going for the big one, not quite getting it off the meat of the bat. That ball, he wanted that to go over long on, but that goes towards wideish mid-wicket, and he'll get just a single. Pooran batting on 2, King batting on 33, the 12th over in progress. Current run rate of 6.79 that West Indies are batting at. King now will look, or will have to look, to go for the big one, because in T20 cricket, when you have got your eye in, you're looking set, now you must look to accelerate. बिल्कुल. अब इसके बाद सिर्फ 8 ओवर बचे हैं और 31 गेंदों का सामना ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रेंडन किंग, तो जरूरत तो है कि लंबे ऊंचे स्ट्रोक्स खेले जाएं यहाँ पर. Right arm over the wicket, banged in, nicely played, a cut, but there's a fielder there at sweeper cover. Akshay Patel covers the ground really well. He races to his left and makes a good save, just a single taken. King there, he showed that intent but couldn't quite get the gap, because when he slashed at that square cut that he hit that with some power, and that intention is very, very important. And I'm sure Nicholas Pooran, who has just walked on to the crease, will have given that message to Brendan King to just go for that big shot, because he needs to do that. The ball that is banged in to Nicholas Pooran goes for that pull shot. The ball goes
goes towards a fine leg on the bounce towards Arshdeep Singh. This can be a good ploy, but it can be a double-edged sword. When you bounce Nicholas Puran, when he connects it, it is so sweetly timed that no fielder can reach that. But if it takes a top edge, it's a good field that Hardik Pandya has set here. मुश्किल है क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत छोटी हैं, 66 मीटर और 67 मीटर की हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये भी बहुत महंगा हो सकता है. लेकिन एक बात और है जिस पे हम चर्चा करेंगे, स्पिनर्स के सिर्फ 3 ओवर बचे हैं. प्रसन्ना. Yes, this time a slower one, a change of pace from Hardik Pandya going for the big one there was Brendan King. He now is looking for the big shots, but somewhere he's also feeling a little edgy where he's not able to get the meat of the bat. And 5 bowlers used so far. Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Akshar Patel has finished his spell. 13 dot balls that he has bowled in his 4 overs, 24 runs and picked up 1 wicket of Kyle Mayers. Kuldeep Yadav has bowled 2 overs, conceded 14 and picked up 1 wicket. Yuzvendra Chahal has bowled 3 overs, conceded 26 and yet to pick up a wicket. Last ball of the 12th over, full toss played towards long on, an on drive from Brendan King. He gets a single, he'll keep strike. 12 overs bowled with 8 overs to go at a run rate of 6.67. West Indies winning the toss, selecting to bat first, are 80 for the loss of 2 wickets. Now, if they are looking at a score of about 145, 150, Nicholas Puran will definitely press on the accelerator and will go on the attack. Now the onus is on King. What is his exact role going to be with 8 overs to go of this third T20 International? उनके पास बस यही ऑप्शन है कि तेज गति से रन बनाएं, और जिस तरह से लगभग जब आप 30-35 गेंदों का सामना कर लेते हैं, बतौर ओपनर आप पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, तो आपकी निगाहें जम चुकी हैं. और T20 क्रिकेट ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो पहली गेंद के साथ ही आपको रन बनाना होता है. बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या कुलदीप को आप गेंदबाजी देते हैं, हार्दिक की नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 ओवर बचे थे स्पिनर्स के, तो मुझे लगता है कुलदीप को ही गेंद थमाई गई है. इस बीच इस गेंद को कट करना चाहते थे बैकफुट पे, बिल्कुल स्टंप्स के सामने की गेंद को खेला वहां पे और गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ. प्रसन्ना. Yes, off the back foot that he wanted to play that, and once again he actually wanted to hit it towards the square of the wicket, but the ball came so slowly, so he had to hit that towards long off, gets a single. अब दूसरी गेंद के साथ तैयार होंगे. बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. माफ करिएगा, पुरन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अब वो स्ट्राइक लेंगे. जॉनसन चार्ल्स के आउट होने के बाद पूरन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. इस बीच कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद आके उनके पैड पे लगी, बैट और पैड पे लगकर वहीं सामने लुढ़क गई. विकेट कीपर वहां संजू भाग कर गए, गेंद को फील्ड किया उन्होंने और वापस गेंद थमा दी गई है अब कुलदीप यादव की. कुलदीप यादव को कदमों का इस्तेमाल किया था और पूरी तरह से यॉक हो गए थे वहां पर. और अब तीसरी गेंद के साथ कुलदीप चले, कोई स्लिप नहीं, कोई नजदीक में फील्डर नहीं. एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर से गेंद पे गए और इस बार उछाल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. What a shot that is from Nicholas Puran. Stepped down the wicket, the ball that was slightly tossed up, but what a shot that is over long gone, the extension of the arms and sweetly timed, and that's the first 6 of Nicholas Puran's bat, and that 6 the longest of the day so far, 88 meters. That 6 has gone, and that is what Nicholas Puran is known for, and that's a switch hit. A left-handed batter in the stance of a right-handed batter has hit that for a right-handed batter's mid-wicket for a boundary. कमाल का स्ट्रोक, क्योंकि कुलदीप यादव ने जैसे ही देखा स्विच हिट के लिए तैयार हो रहे हैं निकोलस पुरन, वाइड गेंद फेंक दी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर. अगर पुरन खड़े होते तो ये वाइड हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप, पुरन पूरी तरह से घूम गए, स्विच हिट के लिए तैयार हुए और उसके बाद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर से गेंद को लपेटा, खींचा मिड विकेट. अगर मैं कहूं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, वैसे तो बाएं हाथ के लिए वो कवर होगा, उस और गेंद को निकाला 4 रनों के लिए एक टप्पे बाउंस के बाद. इस बीच अगली गेंद इस गेंद के ठीक पीछे गए, सुरक्षात्मक तरीके से ही सही, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कलायु के सहारे मोड़ा और इससे पहले कि वहां खुद कुलदीप यादव भाग के जाएं, 30 गज के सिरे के आसपास भी कोई फील्डर ज्यादा दिख नहीं रहा है, 1 रन पूरा कर गए वहां निकोलस पुरन. अब 8 गेंदों पे 14 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए और ब्रेंडन किंग स्ट्राइक लेंगे. 35 गेंदों का सामना किया है, 36 रन बनाए हैं ब्रेंडन किंग ने. आखिरी गेंद के साथ कुलदीप यादव, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए भी वो ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करते हैं, तो कई बार ये भी कई लोग पूछते हैं कि वो उनके लिए
राउंड द विकेट क्यों नहीं आते और इस आखिरी गेंद को बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे। अंदरूनी सिरा लेके गेंद गई वहां, शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच तेजी के साथ भागकर 1 रन पूरा कर गए वहां किंग। इस आखिरी गेंद पर 1 रन के साथ वेस्ट इंडीज अब 93 रन 2 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर के बाद। 93 that West Indies have moved on to, and Nicholas Puran is looking really good. That six that he hit of Kuldeep Yadav over long on for an 88-meter distance that six covered. Our statistician Manoj Kumar tells us that Puran has now hit 94 sixes in T20 internationals. Thank you so much, Manoj, for that stat. Let's see when does he reach 100 sixes in T20 internationals. But the talking point of the previous over, Ankit, has to be that switch hit. That's another invention of the T20 cricket. Kevin Peterson is known for that. David Warner, Glenn Maxwell, Nicholas Puran now with that power, a left-handed batter, just at the stroke of the delivery stride, just changes the grip and the stance, bats right-handed and hits that over a right-hander's mid-wicket. Hardik Pandya bowling the 14th over, a short ball. It was King who wanted to play that over mid-wicket. It hit the back thigh, goes towards backward point. A good early call from Nicholas Puran gets him a single, because Nicholas Puran now wants to be on strike, because the second T20 international, he was unstoppable. He was hitting those shots with such sweet timing. There was no chance for any bowler to stop him. He was literally unstoppable, and he was finding the gaps on that pitch with great ease, where he scored 67 in 40 balls on this very pitch here in Guyana. Let's see what Nicholas Puran does today in the third T20 international. Is off to a very good start, batting on 14 in 8 balls, comes down the wicket, a slower one that he read really well, hits that towards the mid-off area, the mid-off fielder inside the 30-yard circle, a couple of bounces towards long off for another boundary. Nicholas Puran is making his intentions clear. बिल्कुल यहाँ हार्दिक पांड्या ने अपनी उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, लेकिन उसको भाप गए थे निकोलस पुरन, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद के पिच पे पूरी तरह से नहीं गए, लेकिन दूर से ही बढ़िया वो टेनिस बैटेड शॉट जिसको कहते हैं ना, सामने तमाचा मारना, और ये देखते हुए कि मिड ऑन का फील्डर जो है दायरे के अंदर है, उसके ठीक बगल से निकाल दिया 4 रन के लिए। Hardik Pandya bowling his third over has conceded 11 runs. Here he comes, right arm over the wicket. This time, once again, a change of pace, bowled on the middle and leg stump. Nicely played. Flick off the wrists, played that towards fine leg. Puran gets a single. He moves on to 19. King batting on 37 here at the National Stadium in Providence, Guyana. A beautiful stadium. West Indies, if you look at the leading run scorers in T20 internationals, of course it's the universe boss who's on the first rank, 1899 runs in 79 international matches of T20 format, and Nicholas Puran is chasing him with 1613 runs in 78 matches, the strike rate of 131.84. There's Marlon Samuels, Kieron Pollard, Little Simmons, Evan Lewis, Wayne Bravo, some really big names of T20 cricket to have played for West Indies. This time King plays that with some power towards long on. The fielder there at long on will not be able to stop that, and this boundary will bring a sense of relief for Brendan King, who was looking to time it, hit the big ones, and Ankit, now Brendan King finally gets a boundary. किसी तरह से ये चौका उनके खाते में आ गया। शॉर्ट गेंद थी और खेलना उस तरह से चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी प्लेस कर दिया वहां लॉन्ग ऑन के रास्ते से, ये 4 रन आ गए। अक्सर हम ये स्ट्रोक्स देखते नहीं, ये सिर्फ स्लोनेस बताता है इस पिच का, कितना धीमा है ये विकेट। 11 boundaries and 4 sixes so far that the West Indian batters have hit. King now batting on 41, inching closer to that half century. Can he get that? He's going for the big ones. This time, once again, wanted to heave that towards mid-wicket, but it goes all along the ground. Will get just a single. King will keep strike. 14 overs have been bowled here, and at the end of 14 overs, 1 ball to go. I think 1 ball to go, 13.5 overs have been bowled, and the scoreboard reads 104 for the loss of 2 wickets. King batting on 42, Puran batting on 19, the current run rate of 7.52. Hardik Pandya bowling his third over has conceded 2 boundaries in this over. Nicholas Puran hit 1 boundary towards mid-off, and then it was Brendan King who hit a very, very powerful shot towards long on for another boundary. 1 ball still to go of the 14th over.
This time, once again, just rolling his fingers. Change of pace, short ball, played towards mid-wicket. Nicholas Pooran pulls that towards mid-wicket for a single, and now he will keep strike. 14 overs have been bowled, and West Indies winning the toss, electing to bat first, are now 105 for the loss of 2 wickets. Nicholas Pooran and Brendan King now stitching together a good partnership, and now they will have their mind set on a particular score that they both will be discussing, because there's still Roman Powell and Shimron Hetmeyer, still some firepower that the West Indian batting ranks still have. बहुत ज्यादा उनके तो निचले क्रम के बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। रोमारियो शेफर्ड हैं, रॉस्टन चेस भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, अकील हुसैन भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो इन 36 गेंदों पे उनके पास कुल 9 बल्लेबाज अभी हैं और 2 खेल रहे हैं, तो काफी निचली जो उनके क्रम के बल्लेबाज हैं, बहुत ताकत है उनके पास लंबे ऊंचे स्ट्रोक्स खेलने की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के जो आज 3 स्पिनर्स इस मुकाबले में खेल रहे हैं, अक्षर पटेल 4 ओवर में 24 रन देके 1 सफलता अपने नाम किए उन्होंने, और युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर में 26 रन दिए, लेकिन उनके नाम कोई विकेट नहीं है। कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया है 3 ओवर में 27 रन देके। तो सिर्फ अब 2 ओवर बचे हैं स्पिनर्स के। इसका मतलब है कि 4 ओवर और होंगे जो फास्ट बॉलिंग भारतीय टीम वहां करती नजर आएगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये भी रहा ना, मुकेश कुमार को आपने बतौर गेंदबाज टीम में सिलेक्ट किया और अभी तक उनको गेंदबाजी नहीं कराई गई है उनसे। कुलदीप यादव अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और पूरी तरह से चूके, लेकिन इस बार संजू तैयार थे और भारत को एक और सफलता मिलती हुई वहां, जबकि पूरन स्टंप आउट होकर वापस जा रहे हैं प्रसन्ना। That's a big wicket. That's a big wicket for India. It was Kuldeep Yadav who bowled that ball, left arm over the wicket. The ball pitched and turned away from the left-handed Nicholas Pooran. Pooran wanted to hit that over the mid-wicket, a long on area against the spin. He was beaten in the flight. Sanju Samson was ready. This time he makes no mistake. Nicely collected, flicks the bails, and that is a very, very big wicket for India. Nicholas Pooran, who is in the best form of his life, has to walk back out on 20 in 12 balls that he faced, and West Indies now have lost their 3rd wicket with the scoreboard reading 105, and we might as well say, Ankit, that this is a very, very big wicket that India and Kuldeep Yadav have scalped. बिल्कुल, और अब बल्लेबाजी करने के लिए टीम के कप्तान पॉवेल आ रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये तो है ही है कि कुलदीप यादव को जब भी मौका मिला है, और यही कारण है कि चहल भी कह रहे हैं कि कुलदीप ही वर्ल्ड कप के लिए अभी टीम में देखे जा रहे हैं भविष्य के तौर पे। कमाल की गेंदबाजी की, और जो ड्रिफ्ट की भी आप बात कर रहे थे, लेकिन उससे भी दिलचस्प अपने श्रोताओं को बताऊं कि जब संजू ने एक मौका बना था, लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद थी, कलेक्ट करके उन्होंने गिलियां बिखेरी थी, तो आपने कहा था हाँ यहां से कॉन्फिडेंस आया होगा उनको, और तभी से हमने देखा संजू के अंदर वो जो आत्मविश्वास लौटा और यहां पे भारत को सफलता दिलाई उन्होंने। इतना आसान था नहीं, डरे होंगे जरूर। Yes, never easy, because it was Ishan Kishan who was playing as a wicketkeeper all this while in white ball cricket, three one-day internationals, 2 T20 internationals, but now Ishan Kishan is not a part of the team today. Yashasvi Jaiswal is making his debut, and hence Sanju Samson is the wicketkeeper. कुलदीप चले और पहली ही गेंद को पैडल स्वीप करना चाहते थे, किसी तरह से गेंद बल्ले पे लगी, टर्न को भी नहीं समझ पाए, उछाल को भी नहीं समझ पाए पॉवेल, और 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए। थोड़े इत्मीनान के साथ अब वो देख रहे होंगे अपने सामने सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हुए ब्रेंडन किंग को, जो कि 39 गेंदें खेल चुके हैं, और उन्होंने उन्हीं को कह दिया कि अब आप खेलिए आगे बची हुई जो 4 गेंदें इस ओवर की। कुलदीप चले बाएं हाथ से राउंड ओवर द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है कुलदीप की, और इस बीच गेंद के ठीक नीचे आए, पीछे आए, वापस खेल दिया बॉलर की दिशा में। इस गेंद पर कोई रन नहीं। कुलदीप चौथी गेंद के साथ जैसे ही देखा था कुलदीप ने कि किंग आगे आ रहे हैं, गेंद की लंबाई उन्होंने छोटी कर दी थी, इस बीच ये गेंद और स्लॉग स्वीप फिर से करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, इसलिए अपील तो वहां कुलदीप ने की, लेकिन वो खासी उत्साह उस अपील में दिखाई नहीं दी वहां पर। हार्दिक ने भी कहा कि रिव्यू के लिए जाना यहां बहुत उचित है नहीं, भले ही 2 रिव्यू मिलते हैं, लेकिन उसको गंवाने से क्या फायदा। और अब वापस बॉलिंग मार्क पे अपने दिखाई दे रहे हैं वहां कुलदीप यादव। कोई भी खिलाड़ी नजदीक में नहीं है, जो भी 30 गज के सिरे पे फील्डर रखे गए हैं वो सब बिल्कुल सिरे पे ही दिखाई दे रहे हैं। सिंगल रोकने का कहीं कोई दिमाग में यहां पर सवाल नहीं दिख रहा है हार्दिक के। इस बीच ये शॉट गेंद बैकफुट पे क्या शॉट खेला है,
कट करना चाहते थे। आप अंदाजा लगाइए गेंद कितना रुक कर आ रही है और गेंद वापस बॉलर की दिशा में आई और इस गेंद पर भारत को 1 विकेट मिल गया है क्योंकि गेंद सीधे कुलदीप ने कैच कर लिया वहां पर। प्रसन्ना, Oh, that's a lucky wicket. The ball was shot and it was Brendan King who wanted to hit that somewhere towards the backward point area. The ball came so slowly that the bat just hit the ball and it went straight into the hands of Kuldeep Yadav, who receives that gleefully, a cotton ball dismissal. Brendan King has to walk back. He was the one who was set on this pitch, and with wickets that West Indies were losing, he was the mainstay. Now he also has to walk back. That's a double strike from Kuldeep Yadav. He has picked up 2 big wickets, one of the danger man Nicholas Puran and one of the well set Brendan King. Kuldeep Yadav is bowling a fabulous spell here with 1 ball to go. He has picked up 3 wickets. और इसी के साथ उनके 50 विकेट पूरे हो गए। जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है मनोज कुमार हमें ये बता रहे हैं कि कुलदीप यादव ने अपने 50 विकेट पूरे कर लिए हैं T20 क्रिकेट में और अब बल्लेबाजी करने के लिए हेटमायर आए हैं। आप तो कह ही रहे थे प्रसन्ना की बहुत बल्लेबाजी है वेस्ट इंडीज के पास। 53 मुकाबलों में 829 रन हैं शिमरन हेटमायर के, 81 उनका सर्वाधिक स्कोर है। भारत के खिलाफ बड़े अच्छे खेलते हैं, लेकिन विकेट पे बात करते हैं। शॉर्ट गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की ओर, गेंद इतनी धीमी आई, इतना रुक के आई कि गेंद गई बॉलर की ओर और बढ़िया कैच अपने फॉलो थ्रू में। एक वक्त तो हमें लगा ही नहीं कि क्या हुआ वहां पर। He was deceived for pace. The ball came so slowly on the bat and he was disappointed. That's a big wicket once again for Kuldeep Yadav. बिल्कुल, अब आखिरी गेंद के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, बाएं हाथ का बल्लेबाज हो, दाएं हाथ का बल्लेबाज हो। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर के लिए 2 स्लिप लगा रखा है वहां हार्दिक पांड्या ने। इस बीच इस गेंद को बैकफुट पे जाके खेला और उसे शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड कर लिया गया। बड़े सफाई के साथ तो नहीं, फिर भी गेंद रुक गई वहां और रन की कोई संभावना नहीं। तो अच्छा ओवर समाप्त हुआ भारत के लिए, लेकिन दिलचस्प बात प्रसन्ना ये है कि अब सिर्फ 1 ओवर चहल का बचा है और बाकी देखना पड़ेगा कप्तान और किसे इस्तेमाल करते हैं बाकी के ओवर्स में। Oh yes, and 5 overs to go. 15 overs bowled. West Indies 106 for the loss of 4 wickets. And our scorer Sunil Dighe tells us that Akshar Patel has finished his spell. 4 overs, 24 runs and 1 wicket. And Kuldeep Yadav has also finished his spell. 4 overs, 28 runs and 3 wickets. Thank you so much to Sunil Dighe for those stats. Both the left arm spinners have bowled really well and picked up 4 wickets amongst them. 3 by Kuldeep and 1 by Akshar Patel. Yuzvendra Chahal has bowled 3 overs, has conceded 26 runs, is yet to pick up a wicket. With 1 over to go, which over is he going to bowl? With 5 overs to go, what is Hardik Pandya thinking? And as we say, he says, let me finish off the spinners. The quota of the spinners. Yuzvendra Chahal has been the most successful bowler. He gets ready to bowl his 4th over and the 16th over of the innings. Right arm over the wicket that he bowls to Roman Powell. There's a slip in place, but this time he strays down the leg side and nicely played by Roman Powell, just turning it round the corner and playing that towards fine leg for a quick 2 runs that he gets. Our statistician Manoj Kumar tells us that Yuzvendra Chahal is the highest wicket taker in T20 internationals for India with 95 wickets. Bhuvneshwar Kumar is next with 90. Hardik Pandya 73. Ashwin 72. Bumrah 70 wickets. Thank you so much Manoj Kumar for those stats. This time paddled towards fine leg once again by Roman Powell. Wants to come back for the second run. It's a good strong throw from Yashasvi Jaiswal at fine leg. Is that out? What is the decision is what everybody is waiting for. Roman Powell, it was his call. He wanted to be back on strike and he ran really hard. It was well collected on the bounce by the wicketkeeper Sanju Samson. He flicked the bails, but what needs to be seen is, did Roman Powell make his ground good? That's a very good dive. Commitment, dedication personified. He makes full use of his long levers, dives full stretch, ensures that a bat is grounded, well collected by Sanju Samson, but still can't prevent 2 runs. बिल्कुल, और एक कप्तान के तौर पे ये आप चाहते हैं कि लीड करें तो कम से कम पूरी तरह से समर्पित करके अपने आप को झोंकते हुए डाइव लगाया वहां पावेल ने और 2 रन मिल गए।
This time once again on the middle stump, played across the turn against the spin towards mid-wicket for a single. So 5 runs that Roman Powell has scored in the first 3 balls of Yuzvendra Chahal's bowling. Now for the first time, it's going to be Hetmyer to face Yuzvendra Chahal. That's a good matchup. He has picked up Hetmyer's wickets before as well. So that's a good matchup. What is he thinking? Is he looking to bowl that drifter, the ball that goes straight, or is he looking to bowl that wrong one? He looked to bowl that flatter trajectory and will look to deceive the left-handed batter Shimron Hetmyer, because Hetmyer also now with 3 balls to go of Yuzvendra Chahal's spell will be thinking, should I attack or should I defend? And that's what Hetmyer does. He just plays that defensively, watchfully, because he knows with 2 balls now to go, he doesn't want to concede his wicket to Chahal. He gets a single easily. He moves on to 1. He gets off the mark. West Indies at one point of time were so strong when they got off to a flying start, 55 runs for the first wicket in 7.4 overs. But after that, they've lost wickets at regular intervals. And especially Kuldeep Yadav has been the recurrent chief. He has picked up wickets consistently in his 4-over spell. This time, a flatter trajectory. Once again, a short ball off the back foot, played with a straight bat towards long on by Roman Powell. He gets a single. So the big shots in the slog overs that the West Indian batters would ideally like to hit are not coming. But after this over, it's going to be the pacers who are going to bowl. Are the West Indian batters waiting for that? Hardik Pandya, then it's going to be Arshdeep Singh, and Mukesh Kumar is yet to bowl. A loud appeal, crashed onto the pads and given not out. Is Yuzvendra Chahal going to go for the DRS? And yes, he does go. The first review that India had taken was successful of the bowling of Kuldeep Yadav. This time, we'll see what do visuals tell us. But Ankit, the original decision is not out. बिल्कुल, गेंद देखना होगा कि पिच कहाँ हुई थी, मिडिल और लेग स्टंप की इस गेंद को फ्रंट फुट पे, अक्सर हमने इस पूरी पारी में किसी को नहीं देखा है फ्रंट फुट पे खेलते हुए, फ्रंट फुट पे फ्लिक करना चाहते थे और गेंद मिडिल और लेग स्टंप से टर्न हुई है, कितना देखना पड़ेगा। एक लेग स्पिनर्स की गेंद कई बार हम देखते हैं टर्न होती है, लेकिन एक और दिलचस्प बात है कि बल्ला भी बहुत करीब है। क्या गेंद ने बल्ले का कोई किनारा लिया है? आपको बताऊं कि दूसरे टी20 में युजवेंद्र चहल ने ऐसे ही रिव्यू लेके हेटमायर को आउट किया था। Yes, and that is why we said that it's a good matchup. And he knows where to bowl to Shimron Hetmyer, and that is what exactly he has done here. What the umpire is now checking is the ultra edge. Now in that, if there is a slight movement, what the umpire, Leslie Reifer, will be checking is that when there is that slight movement on the ultra edge, has it taken the inside edge or has the bat hit the ground on the pitch? Because it has made a sound for sure, and Leslie Reifer will be now checking that is it an inside edge. It looks to be, but we'll still wait for what the umpire has to say. He says yes, there's that inside edge, so that not out decision will be upheld, and that is where India lose a review. Yuzvendra Chahal finishes his spell without picking up a wicket. In the first 2 matches he had picked up 4 wickets, but here on the third T20 international, he does not pick up a wicket. Manoj Kumar, our statistician, tells us that this was the 20th instance when Chahal failed to take a wicket in T20 internationals. Thank you so much, Manoj Kumar, for that stat. 20th match or 20th instance when Yuzvendra Chahal has failed to pick up a wicket. And Sunil Dighe, our scorer, tells us that Chahal also has finished his spell. 4 overs, 33 runs and no wickets. 4 overs to go, Ankit. 16 overs bowled, Hetmyer batting on 1, Powell on 7, West Indies 113 for 4. Where do you think West Indies are reaching? 140? 150? 150 ही है जिसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं, वही 7 साढ़े 7 के आसपास का वो रन औसत। लेकिन ये जो 24 गेंदें बची हैं, वेस्ट इंडीज के पास 6 विकेट हैं और रनों की औसत इस समय 7.06 की है। इस हिसाब से 142 रन के आसपास स्कोर दिख रहा है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के बल्लेबाज हैं, टेलेंडर्स जितने आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, अर्शदीप को इस बीच कप्तान हार्दिक पांड्या ने याद किया है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, शॉर्ट गेंद, बैकफुट पे कट किया और इस गेंद पर 1 रन मिला वहां कप्तान पॉवेल को, और अब हेटमायर स्ट्राइक लेंगे। तो पिछले ओवर में बहुत कुछ हुआ। चहल के ओवर में हमने देखा कि एक ऐसी गेंद जाके पैड पे लगी, लेकिन बल्ले के किनारे ने बचा लिया हेटमायर को, और अब देखना है कि जो 23 गेंदें बची हैं उसका किस तरह से कप्तान हार्दिक पांड्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि
मुकेश कुमार को एक ओवर तो कम से कम मिल जाएगा, क्योंकि हार्दिक का सिर्फ एक ओवर बचा है और अर्शदीप के पास इसके बाद 2 ओवर और हैं, तो 2 और 1 3, तो 3 ही ओवर और हो पाएंगे। लेकिन अर्शदीप बैक टू बैक नहीं कर सकते, तो इसके बाद एक ओवर किसी भी कंडीशन में मुकेश को मिल जाएगा। इस बीच अर्शदीप चले ये फुल टॉस गेंद ओवर द विकेट और इस गेंद को मोड़ा वहां ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन इस गेंद पर मिल गया हेटमायर को। तो चौके छक्के नहीं आ रहे हैं, जिस रफ्तार से बल्लेबाजी होनी चाहिए डेथ ओवर्स में उस तरह से बल्लेबाजी हो नहीं रही है। अर्शदीप सिंह हालांकि उस लेंथ को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। डेथ ओवर की जो गेंदबाजी होती है अक्सर हम यॉर्कर्स देखते हैं प्रसन्ना, लेकिन फिर भी 2 गेंदों पर अब तक सिर्फ 2 रन आए हैं और दोनों ही गेंदें अलग अलग, एक शॉट और एक फुल टॉस। He's bowling well, but now Arshdeep Singh will look to hit that block hole. He's looking for that Yorker, and it's not easy to bowl, but this time he gets that length correctly. A Yorker, but played with a straight bat towards long on. Never easy. What happens is when you just slightly overdo, that Yorker turns into a full toss. बिल्कुल, और जिसकी बात कर रहे थे हम, यॉर्कर नहीं आया है इस गेंद पर। 1 रन आया, यॉर्कर आखिरकार आया, लेकिन सीधे बल्ले से पॉवेल ने इस गेंद पर खेलकर 1 रन लिया। तो 3 गेंदें इस ओवर से हुई हैं, उस पर 3 रन आए। 1-1 रन से कुछ होने जाने वाला है नहीं, और इस बात को कप्तान जानते हैं। हार्दिक पांड्या बड़े आक्रामक कप्तान के तौर पे अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ कर पाते हैं। इस बार ये शॉर्ट गेंद, और इस गेंद को पुल जरूर किया था, लेकिन वहां कैच छूटा और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए कुलदीप यादव से। देखना होगा क्या ये शॉट था कि गेंद हाथ से लग कर गई है, लेकिन पूरी तरह से इस बार हिटमायर तैयार थे स्ट्रोक्स खेलने के लिए। It was a short ball. The fielder there stationed that short fine leg. Hetmeyer went for the pull. It just fell in front of Kuldeep Yadav. Never easy. It was not a catch, but he tried well. He tried really well. It fell in front of him. It hit his hands, but never easy to stop them. It ricocheted off his hands and goes towards fine leg for the 12th boundary of this innings. West Indian batters have hit 4 sixes as well. बिल्कुल, इस बीच अर्शदीप चले। इस बार ये शॉर्ट गेंद, इस गेंद को पुल किया है, उस ओर फील्डर पहुंच रहे हैं और किसी तरह से गेंद को रोका वहां, और सीमा रेखा के पार खुद चले जा रहे थे ऐसा लगा उनको, तो उन्होंने गेंद को छोड़ दिया। जायसवाल थे फील्डर वहां, और बाद में फिर से थ्रो किया। इस दौरान मौका था 2 रन बनाने का हेटमायर को। अच्छी खासी फील्डिंग हमने देखी है जायसवाल से टेस्ट सीरीज में भी, और इसको जब T20 की बात होती है जहां आपके पास गेंद इतना आता नहीं है, उसके बावजूद आपको हर एक गेंद पे अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है। फिर से तैयार होंगे हेटमायर वहां पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 145 का दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से रन गति से जिससे बल्लेबाजी हो रही। इस बीच ये फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इसे कवर के रास्ते से गेंद इससे पहले फील्ड हो।
that 150 run mark, but here they are struggling because the Indian bowlers, especially the spinners, have bowled really well. And Mukesh Kumar, now bowling his first over, has picked up the wicket of the very first ball, this time off the back foot. Nicely played towards backward point by Romero Shepherd. He gets off the mark. He's batting on 1. Roman Powell batting on 9. So 2 right-handed batters now on 1 and 9 respectively. Shepherd on 1, Powell on 9. Current run rate of 7.09. West Indies will look to reach that 150 run mark, but the projected score, the current run rate that they are going at, 7.09, tells us that 142 is where they'll reach. If they go 10 runs per over, then they might reach towards that 150 run mark. But on this pitch, that score will be a good one. Full toss outside the off stump, just opens the face of the bat. There is Roman Powell, and the sweeper cover will not be able to stop that. Excellent placement by Roman Powell, gets a boundary towards the backward point. बिल्कुल, और कप्तान के तौर पे जानते हैं कि किस तरह से पारी को यहाँ बुनना है। निकोलस पुरन के बाद दूसरे हाईएस्ट गेटर हैं अपनी टीम के लिए इस सीरीज में। फुल टॉस पे लेके इस गेंद को ड्राइव किया था, भटके वहां लेंथ से मुझे लगता है, और ये फुल टॉस गेंद आप इस स्थिति में करेंगे तो मौका तो होगा हाथ खोलने का। And that is exactly what Roman Powell did. He moves on to 13. That was his first boundary. A full toss outside the off stump, just opened the face of the bat, and that effects a field change. There's a short third man, deep backward point, sweeper cover, and mid off on the offside for the right-handed Powell. And this time a ball that is outside the off stump, he hits it towards the widest long on area, and good running between the wickets results in 2 runs. So Roman Powell now definitely looking to go for the big ones, and understandably so. The West Indian batters have to go for the big ones because they will be aiming to reach that 150 run mark with 2.1 overs to go. So 13 balls still left. This is the 18th over and 1 ball to go. Mukesh Kumar is bowling his first over. 2 overs to go. Arshdeep Singh is left with 1 over, with 2 overs, and Hardik Pandya also has 1 over to go. So that is to be seen, that who bowls these last 2 overs. A short ball pulled away in the gap between mid-wicket and long on. Tilak Varma there at long on stops that ball. 8 runs and a wicket of the first over that Mukesh Kumar has bowled, which was the 18th over of the innings. And here we are at the end of 18 overs. West Indies, after winning the toss and electing to bat first, are now 131 for the loss of 5 wickets. 2 overs to go. 145 on the cards. Ankit, what's your call? बिल्कुल 145 और 150 के बीच का ही कुछ स्कोर होगा, और कप्तान हार्दिक पांड्या भी यही चाह रहे होंगे कि 150 से नीचे ही हो। वो किसी तरह से नहीं चाहेंगे 150 के ऊपर जाए। अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, क्योंकि 2 ओवर जो बचे हैं, अर्शदीप ने 2 ओवर में 16 दिए हैं और हार्दिक ने 3 ओवर में 18 रन दिए हैं। एकमात्र विकेट मिला है फास्ट बॉलर को, वो मिला था इस बीच पहली गेंद, जिस गेंद को उछाल कर खेला वहां एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए पॉवेल ने। What a shot that is! Brilliantly hit. Arshdeep Singh's slow one, it was 117 kilometers per hour. He spotted that, and on the offside, outside the off stump, it has been hit with some power. बिल्कुल, और 86 मीटर का ये लंबा छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जब बल्लेबाज इस तरह से स्ट्रोक्स खेलने लगे तो गेंदबाज डर जाता है, उनको समझ आता नहीं है कि क्या करें। हालांकि 5 गेंदें बची हैं, और लेकिन एक बात अच्छी है भारत के लिए कि कोई भी फील्डर दायरे के बाहर एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ रहा है पेनल्टी के तौर पे, क्योंकि भारत ने अपने कोटे का जो ओवर है सही समय पे कर लिया। इस बीच फुल टॉस पे लेके ड्राइव किया इस गेंद को, और इससे पहले कवर पे वहां फील्ड करते जायसवाल थ्रो करते तेजी के साथ भागकर पॉवेल ने 2 रन बना लिए। 24 पे पहुंच गए हैं 12 गेंदों पर। तो जैसा मैं बार बार कह रहा था कि 9:30 तक अगर आपने अपने पूरे 20 ओवर कर लिया, 20वां ओवर शुरू हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा फील्डर नहीं रखना पड़ेगा। 30 गज के अंदर आपको फील्डर नहीं रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 4 मिनट में वो 4 गेंदें हो जाएंगी। इस बीच अर्शदीप चले
बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है पॉवेल। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा होता हुआ, तो एक रन और आ गया अतिरिक्त के तौर पे। 140 अब वेस्ट इंडीज 5 विकेट के नुकसान पे। तो मैं ये भी कह रहा था कि अब तक किसी फास्ट बॉलर को विकेट इस पारी में नहीं मिला है। मुकेश ने अपनी पहली ही गेंद पे विकेट दिलाया भारत को, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा हार्दिक ने 3 ओवर गेंदबाजी की है, अर्शदीप ने 2। तो इन 5 ओवर में तो किसी ने भारत को सफलता नहीं दिलाई है। Oh, that's a very good point that you make, Ankit, that it's been the spinners who have picked up all the wickets. Mukesh Kumar on the very first ball that he picked up a wicket, but Arshdeep Singh, Hardik Pandya yet to pick up a wicket. Here comes Arshdeep Singh. इस बार इस गेंद को उछाला है और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। What a shot that is. Robman Powell is guessing those slower ones with great consistency. He's anticipating that Arshdeep is going to change the pace. He rolled the fingers. He just waited, and that is a towering 6, 97 meters long. That 6 is from Robman Powell. He is out of Guyana. और मुझे लगता है इस पारी का सबसे बड़ा छक्का है ये। इतने सारे स्ट्रोक्स खेले हैं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने, लेकिन ये जो स्ट्रोक खेला, गेंद को बिल्कुल परख लिया था। रफ्तार सबसे पहले समझ ली थी वहां कप्तान पॉवेल ने। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो पावर जनरेट करते हैं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, उसका तो कोई सानी ही नहीं है ना। अब चौथी गेंद के साथ उसी एंगल के साथ गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट शॉट गेंद, जिस गेंद को पुल करना चाहते थे, इस बार लेंथ में परिवर्तन किया अर्शदीप ने और इससे चकमा खा गए। इस गेंद पे कोई रन नहीं आया, गेंद आके शरीर में टकराई। 33 वर्ष के हैं पॉवेल, लेकिन भारी भरकम शरीर के दिखते हैं, लगता नहीं है। और जब दौड़ते भी हैं तो कितनी तेजी से भागते हैं प्रसन्ना विकेट में। Yes, he's a powerful unit, Robman Powell, and he can hit the big shots, and he has shown that. Arshdeep Singh's 19th over of the innings, and he has hit 2 fabulously timed 6s, 1 over extra cover, 1 over long off, and both with great power and wonderful timing. He's off to 30 in just 14 balls. बिल्कुल, अब 3 फील्डर ऑफ साइड में उसकी वजह से ही बाउंड्री पे है, 2 फील्डर सिर्फ ऑन साइड में बाउंड्री पे दिखाई दे रहे हैं। अर्शदीप चले बाएं हाथ से, इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, वाइड एक और इस ओवर में आ गया है वेस्ट इंडीज के लिए। तो 1 रन और आ गया है उनके खाते में। 147 अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। 4 वाइड अब तक उन्हें मिला है, मुझे लगता है 3 उसमें अर्शदीप के वजह से मिला है और 1 चहल ने शायद किया था। Yes, Shefford batting on 1, Powell batting on 30, 8 extras, 4 wides, 3 leg byes, 1 bye. Arshdeep Singh has conceded 32 in the 3rd over that he is bowling. 2 balls still to go, the 19th over in progress. And now West Indies are 147 for 5. We were saying, can they reach 150? Now they're just 3 runs away from 150 with about 8 balls to go, 8 legitimate deliveries to go. 1 over, 1 big over, this one has completely changed the current run rate, which is 7.88. बिल्कुल, अब देखिए 3 फील्डर्स ऑन साइड में बाउंड्री पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वो शायद मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर गेंद करने वाले हैं। बिल्कुल वही यॉर्कर लेंथ की गेंद, जिस गेंद को फ्लिक किया और इस बीच उसे फील्ड कर लिया गया सूर्य कुमार यादव के द्वारा मिड विकेट पे और 1 रन। तो स्ट्रैटेजी बदली वहां। अर्शदीप ने जो 3 फील्डर्स उन्होंने ऑफ साइड में लगा रखे थे और लगातार बाहर गेंद कर रहे थे, वाइड इस बीच 2 मिला और 2 पे लंबे लंबे छक्के आए और फिर उन्होंने अब अपनी रणनीति बदली है। और अब वो एक जो सिचुएशन होती है ना फास्ट बॉलर के लिए, आखिरी ओवर्स में यॉर्कर करिए, विकेट्स पे गेंदबाजी करिए। 18.5 overs, 1 ball to go, 148 for 5. Roston Chase is ready with the pads on. Here comes Arshdeep Singh to bowl the last ball of the 19th over. इस बार दूर से बल्ला चलाना चाहते थे और शायद गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। इस ओवर में इस गेंद पर तो कोई रन नहीं आया, लेकिन 2 छक्कों की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया वहां 148 पे 5 विकेट के नुकसान पे पॉवेल ने। और आखिरी ओवर देखना होगा, क्या मुकेश करते हैं या हार्दिक, प्रसन्ना बताएंगे आपको। Oh yes, Ankit, with 1 over to go, West Indies are 148 for 5. Hardik Pandya has 1 over left. Mukesh Kumar has bowled just 1 over. And that is what the discussion point has been. Who will bowl the last over of this first innings of the 3rd T20 International being played here at the National Stadium, Providence, Guyana. West Indies won the toss, selected to bat first, and here they are, 148 for 5. That last over has given them the momentum. At one point of time, Ankit, we were saying 145 maybe, 150.
Kohli, but now they're on the cusp of reaching 160 with Mukesh Kumar getting ready to bowl his second over and the last over of the first innings. Shefford batting on 1, but he'll be at the non-strikers end. Roman Powell is batting really well, batting on 31 and 15 balls with 1 boundary and 2 sixes at a strike rate of 206.67. Shefford is a powerful unit. He packs a punch, bats with a watch that he wears, and that's a typical West Indian trait. Kieron Pollard used to do that. Here he comes, Mukesh Kumar, the first ball, nicely bowled, right in the block hole, 138 kilometers per hour. That's good pace, good precision, and a top-class Yorker, Ankit. बिल्कुल, और पिछले ओवर में 17 रन आए प्रसन्ना, तो इस लिहाज से तो ये जरूरी था कि कम से कम 6 गेंदों का ये जो ओवर है उसमें शुरू के 1-2 गेंदों पर तो रन ना दिए जाए, ताकि वो जो 160 कहीं दिमाग में ना चला जाए वहां कप्तान पॉवेल के. Yes, Mukesh Kumar has bowled really well. The first over that he bowled is never easy when you're a new ball bowler and you haven't been introduced into the bowling attack till the 17th over. You've got your first over. On the very first ball, you picked up the wicket of Shimron Hetmyer. Now bowling his second over, which is the last over of the first innings. It is a very, very difficult task, but Mukesh Kumar is making it look really easy. Off the inside edge, on the bounce, it goes towards Sanju Samson, who takes his left hand out, and a half stop will result in a single. Roman Powell is now off strike. He's now at the non-strikers end. But Romario Shefford also has that ability to hit the ball really long. Once again, a tall cricketer bowls with some good pace. Let's see if he can pack some punches here, because Roman Powell there just had a quick word with Shefford and he must have told him what is the length that you should anticipate when Mukesh Kumar is bowling. Here Mukesh Kumar gets ready. The third man is inside the 30-yard circle. Right arm over the wicket to the right-handed Romario Shefford. Romario Shefford wanted to give himself some room, and that is where Mukesh Kumar just bowls it outside the off stump, but well inside the wide markings. So that will be a dot ball. The last over, first 3 balls, Mukesh Kumar has conceded just a single. वो भी मिसफील्ड होने के बाद जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं, जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं, उस सटीक लाइन और लेंथ पर खासतौर पे ऐसे सिचुएशन में इतने प्रेशर में आप यॉर्कर्स कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल स्टंप पे या ऑफ स्टंप के ऊपर और बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद, रूम बिल्कुल भी नहीं है. 3 balls to go. Mukesh Kumar bowling his second over and the last over of the first innings. This time once again in the block hole. This is top class bowling from Mukesh Kumar. There are 2 powerful hitters, Shefford and Powell, on the crease, but in the last over, the Yorkers that Mukesh Kumar has bowled have been not only with good pace but with great precision as well. Just 2 singles, 2 dot balls, 2 balls to go. Mukesh Kumar is bowling his second over, 1.4 overs, has picked up 1 wicket. That was the very first ball of his spell of Shimron Hetmyer. Now with 2 balls to go, what is the field? The square leg is inside the 30-yard circle, the mid-wicket and long on the boundary line. Here comes Mukesh Kumar bowling to Roman Powell with the third man inside the 30-yard circle. Full toss that he bowls, and the Yorker this time not quite finding the precision that we were so appreciative of. But this time a full toss over mid-wicket, sweetly timed. Powell hits that for a 6. अक्सर यही गलती हो जाती है फास्ट बॉलर्स से, क्योंकि यॉर्कर आप इतने सटीकता से फेंक नहीं पाते हैं अंतिम ओवर्स में. ये फुल टॉस गेंद और घुटनों के बल बैठकर गेंद के नीचे आकर लो फुल टॉस को 81 मीटर का छक्का मिड विकेट पे मारना आसान है नहीं. तो ये ताकत भी है कप्तान पॉवेल में और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया. रंग में है, 18 गेंदों पे 38 बनाकर खेल रहे हैं. 1 ball to go. Roman Powell, his innings is going to be so crucial when India come in to chase, because he has changed the momentum and now pressure. Mukesh Kumar bowls that way outside the off stump and that will be a wide ball. He started this over well, but now because of that 6, he wanted to bowl that wideish Yorker, but this time it went way outside those tram lines and that will be a wide ball. Scoreboard moves on to 157. We were discussing about 140, 145, 150, but now the scoreboard is inching towards that 160 run mark. The current run rate that West Indies are batting at is 7.92. 1 ball to go of the last over. Roman Powell just has a quick look
at the field. The third man is inside the 30-yard circle. Mid-wicket and long on the boundary line. Mukesh Kumar to bowl the last ball of the first innings. Here he comes, right arm over the wicket to the right-handed Rohit Powell. This time nicely bowled, but played towards mid-wicket. Akshar Patel there at deep mid-wicket stops that ball, and 2 runs is what Rohit Powell gets, and the West Indies get. Rohit Powell finishes with 40 not out in 19 balls, and what a knock that is. A momentum shifting knock at the end of 20 overs. West Indies, after winning the toss, electing to bat first, have scored 159 for the loss of 5 wickets. If you were to give you a quick summary of the first innings, 25 in 20. Johnson Charles 12 in 14 balls. Nicholas Puran 20 in 12 balls. Rohit Powell has played a scintillating knock. Not out 40 in just 19 balls at a strike rate of 210.53. Romero Shepherd not out on 2. Shimron Hetmeyer tried to hit the big one, out on 9. The pick of the bowlers was Kuldeep Yadav. 4 overs, 28 runs and 3 wickets. Mukesh Kumar picked up a wicket. Akshar Patel with his left arm spin, 4 overs, 24 runs and 1 wicket. Yuzvendra Chahal did not pick up a wicket in the third T20 international. So that's what the update is. West Indies have scored 159 for 5. India have a target of 160 to win and stay alive in the series. But do not go anywhere, because we have a special mid-inning show coming.
एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है प्रसन्ना। And first runs in T20 international cricket for Yashasvi Jaiswal. He'll remember this moment for a lifetime. Making his debut, short ball pulled towards square leg, and he has got off the mark. Team India have got off the mark, but this target of 160 will require a very good start from the young and debutant Yashasvi Jaiswal along with Shubman Gill. शुरुआती ओवर्स में अक्सर हमने जैसे जैसे T20 क्रिकेट बदलता चला गया, स्लिप सिर्फ एक ही रखते हैं कप्तान। इस बीच ये गेंद प्लेस कर दिया, वहां शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन स्टीयर के अंदाज में शानदार प्लेसमेंट शुभमन गिल के बल्ले से। That was wonderfully placed because he knew the fielder. He knew that the fielder at third man is inside the 30-yard circle. He waited, and in the end he cut that and ensured that it goes to the right side of the short third man and gets his first boundary. Good start for Shubman Gill. बिल्कुल, शुभमन गिल अब तक जो पिछले 2 T20 मुकाबले खेले गए उसमें अच्छे रंग में नजर नहीं आए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है आज शायद उनका दिन है। ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तीसरी गेंद के साथ ओबिन मौका है, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने पिछले 2 T20 मुकाबले में। इस भी पैड लाइंस की इस गेंद को फ्लिक किया, तेजी के साथ भागकर 1 रन पूरा कर गए वहां। और थ्रो अगर शायद स्टंप्स पे लगता तो जायसवाल खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन बच गए वहां पे। 160 बनाने हैं भारत को, 6 रन बन चुके हैं अब तक 3 गेंदों में, तो बहुत कुछ घटित हुआ है। एक चौका लगा है, जायसवाल ने अपने T20 करियर का पहला रन लिया है, और अभी एक तेजी के साथ भागकर एक सिंगल लिया गया है। 6 without loss, the first over in progress. Obed McCoy, left arm over the wicket. This time, Yashasvi Jaiswal going for the big one. The fielder there at mid-on will not make a mistake. Alzari Joseph takes a very well judged catch. And that's an early setback for the Indian team. Yashasvi Jaiswal on his debut going for the big shot has to walk back out on 1. पूरी तरह से चूक गए और वो बल्ला हाथ में घूम गया। ये ओवर पिच गेंद, जिस गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, और 30 गज के सिरे के ऊपर वहां जोसेफ तैयार खड़े थे कि किसी तरह से अगर कोई मौका बनता है तो उसे कैच में तब्दील किया जाए और विकेट उस पे मिले वेस्टइंडीज को। तो इस तरह से भारत ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है और 1 रन बनाकर दूसरी ही गेंद अपनी पारी की, अपने करियर की पहली पारी जो वो खेल रहे थे जायसवाल, आउट होकर वापस पवेलियन चले गए हैं। भारत के लिए यह बड़ा आघात है। पावर प्ले में जहां 160 बनाने हैं आपको, रनों की गति लगातार बढ़ाकर रखनी थी, आउट होकर के वापस चले गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह चौथा मौका है जब शुभमन गिल पहली ही गेंद पर उन्होंने अपने चौका लगाया है, लेकिन आज शायद उतना खुश तो नहीं होंगे क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज जोड़ी के तौर पे जो आए थे वापस पवेलियन चले गए। Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal, the opening batting pair has been broken because Yashasvi Jaiswal has walked back to the pavilion, and that has brought Surya Kumar Yadav to the crease. 51 matches that he has played, 1,697 runs, but in search of runs, can he take India to their first victory in this T20 international series? Yashasvi Jaiswal went for the big one. ये अंदाज है नए खिलाड़ियों में, वो डर बिल्कुल भी नहीं है, वो पहली ही गेंद के साथ जाते हैं, स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाते हैं। ईशान किशन को भी अक्सर हमने देखा है कि पीछे से उनका बल्ला आता है और बिल्कुल क्वांटन डिकॉक की तरह से जोर से बल्ला चलाते हैं पावर प्ले में, और यही कुछ हुआ जायसवाल के साथ भी। इस बीच सूर्य कुमार यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और पहली ही गेंद पैड लाइंस पे फ्लिक किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। Oh, this is a gift for Surya Kumar Yadav, and he has accepted that gift because anything that strays on the leg stump, on his pads, he will hit that over that entire leg side that he has, either front of square or behind square. This time he hits that over mid wicket for his first runs that come off a boundary, exactly like Shubman Gill's first scoring shot was a boundary. It is Surya Kumar Yadav also who opens his account with a boundary. 5 गेंदों में 2 चौके लगे हैं और 1 विकेट का भी पतन हुआ है। इस बीच शॉर्ट गेंद और इस बार पुल कर दिया खूबसूरती के साथ, कोई फील्डर नहीं वहां पर और होता भी तो कुछ नहीं करता। 6 रन। What a shot that is! A short ball hit over fine leg for a long 6 that actually went
on the grass banks that are there here at the stadium in Guyana. A ball that was pitched short, and anything that you give Surya Kumar Yadav in his area where he can just make some space for himself and hit it over square leg, mid wicket or fine leg, he is absolutely brilliant, and that is another gift that he has received. He has started his innings with a boundary and a long six that, as we discussed, has gone straight on to the grass banks. He's batting on 10 in 2 balls with a boundary and a 6. What a shot that was. Obed McCoy pitched it in short, and the fine leg fielder there was just a mere spectator. It was a crowd catch, but they also couldn't quite latch on to it. An expensive over this comes to an end. 16 runs of the first over. Bowling change, spinner Akil Hussain gets ready to bowl. Left arm round the wicket, plays that with a slightly open face of the bat. Shubman Gill plays that towards backward point and does not get a run. Gill batting on 4, Surya Kumar Yadav batting on 10. Let's see what Surya Kumar Yadav does when he faces a spinner. Gill batting on 4, flighted delivery, nicely played with a straight bat towards long off for a single. Surya Kumar Yadav now on strike. Manoj Kumar, our statistician, tells us that in international cricket, this was the 9th instance when Surya Kumar Yadav opened his account with a boundary. Thank you so much, Manoj, for that stat. 17, India move on to. Surya started with a boundary, followed it up with a 6, batting on 10 in just 2 balls. So he's off to a flyer. Gill batting on 5. Yashasvi Jaiswal, the debutant, back in the dugout, going for the big one. Good catch by Alzari Joseph. Akil Hussain with his left arm spin has some good tricks up his sleeve. What is he thinking about? Left arm around the wicket to the spinner. There's a slip in place, this time off the back foot. But once again, the West Indian captain also introducing a spinner in the power play. बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि क्या वो पहले ओवर से ही जाएंगे या नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि कम से कम दूसरे ओवर में उन्होंने अकील हुसैन को याद किया और अच्छी गेंदबाजी करते हैं. बाएं हाथ के कमाल के स्पिनर हैं और जब भी मौका मिला है, खासतौर पे सैमसन को और गिल को जिस तरह से उन्होंने आउट किया है. Akil Hussain left arm round the wicket. The slip has gone towards short third man. Going for the drive there was Surya Kumar Yadav was beaten. But lucky from an Indian perspective that it did not take the outside edge. The ball is turning and it had some good bounce as well. Nicely collected. Once again, this is excellent bowling from the West Indies. But the third umpire has signalled that that's a no ball. We were saying this is excellent bowling. He beat the batter there, Akil Hussain. But you cannot make this mistake. In T20 cricket, for a spinner to bowl a no ball is almost next to a crime. You cannot do that, and that's a free hit for Surya Kumar Yadav. Nicholas Puran, the wicket keeper, is just having a look at the field. Can't make any change in the field. It's the same batter who's on strike. Free hit coming up. Surya Kumar Yadav to face Akil Hussain. This time over the infield, over the backward point fielder, inside the 30-yard circle. No fielder on the boundary line. That's a free hit and a free boundary that Surya Kumar Yadav obliges and accepts. बिल्कुल ये स्ट्रोक सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही खेल सकते हैं, उनके अलावा ये स्ट्रोक कोई और नहीं खेल सकता. ऑफ स्टंप के ऊपर बल्ला बिल्कुल ऐसे घुटनों के बल बैठ गए जैसे स्वीप शॉट खेलना चाहते हो और पूरी तरह से बल्ले को चारों तरफ घुमाया और जैसे ही गेंद कनेक्ट हुई पॉइंट के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए. ये अजूबा स्ट्रोक सिर्फ वही खेल सकते हैं. Oh yes, Surya Kumar Yadav can hit these unorthodox shots. He is capable of hitting the ball anywhere on the ground, and that's why that name 360-degree cricketer, which was first to A.B. de Villiers, but this time strays down the leg side. Once again, nicely played by Surya Kumar Yadav. Plays that with a straight bat towards wideish long on. Gets a couple of runs. He is raced off to 16 in just 6 balls. Shubman Gill is batting on 5 in 4 balls. But what Gill is doing smartly is ensuring that Surya Kumar Yadav gets all the strike, because once he is in this kind of form, he can just take on any bowler irrespective of the line and the length that he bowls. This time a flighted delivery. The ball once again stopped and came onto the bat. The fielder there was interested at short extra cover, but lucky for Surya Kumar Yadav, it just went wider of that short extra cover fielder. But another good over for Team India. They get 9 of this over. 2 overs bowled, 16 of the first over, 9 of the second. 2 overs bowled, chasing 160. India are 25 for 1 with
the wicket that West Indies have picked up off the debutant Yashasvi Jaiswal, who walked back and scored just a single. बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप प्रसन्ना कि इस स्थिति में भारत की ये ठीक ठाक शुरुआत कहूंगा, क्योंकि जायसवाल बहुत जल्दी आउट हो गए थे। तब स्कोर था 6 रन स्कोर था, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पे 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो उनके पास तकनीक है और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। अब एक और गेंदबाजी में परिवर्तन, मौकाए के पहले ही ओवर में जो 16 रन आए, उसकी वजह से कप्तान ने उन्हें हटाया है उस शोर से, और अल्जारी जोसेफ को गेंदबाजी दी गई है। तेज गति के गेंदबाज हैं और 140 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद के साथ तैयार होंगे, दौड़ना शुरू किया उन्होंने, ओवर द विकेट गेंद और अंदरूनी सिरा लेके वहां सूर्य कुमार यादव की गेंद पैड पे लगी, खुद फॉलो थ्रू में जाके जोसेफ ने गेंद को फील किया, वापस पलट गया अपने बॉलिंग मार्ग पे। ये तीसरा ओवर पारी का फेंका जा रहा है, जबकि हमने देखा कि दूसरे ओवर में कप्तान ने एक स्पिन ऑप्शन तलाशा वहां और अकील हुसैन को गेंदबाजी दी, लेकिन उस ओवर में भी 9 रन आए और सदी हुई बल्लेबाजी मैं कहूंगा प्रसन्ना की सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने की। Especially Surya Kumar Yadav is batting on 17 in 8 balls, and if he can just get going with this kind of strike rate, it is going to be difficult to stop him. अल्जारी जोसेफ इस बार ये शॉर्ट गेंद बैकफुट पे पंच किया, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ वहां गेंद को फील्ड किया गया है, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास मौका कि 1 रन बनाकर अपने अपने छोर बदल सकें। अब 26 स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पे। तो भारत को जीत के लिए इस मैच में 160 रन बनाने हैं। गयाना के इस प्रोविडेंस स्टेडियम में ये मुकाबला हो रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो 2 और मैच बचे हैं वो यूएसए में खेले जाएंगे, और ये भी जानते हैं कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी यही होना है। तो उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि भारतीय बल्लेबाज इस विकेट से थोड़ा अभ्यस्त हों। हालांकि अब ये देखना होगा कि कितने और मौके और किन किन खिलाड़ियों को मिलते हैं इस टूर पे। इस बार ये शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, उसे जाने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, और इतनी ज्यादा बाहर नहीं थी कि वाइड करार दिया जाए इस गेंद को। तो इस गेंद पर कोई रन नहीं आया। शुभमन गिल 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सूर्य कुमार यादव 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन एक चर्चा जो कुछ देर पहले हम कर रहे थे, जब मिड इनिंग्स ब्रेक में बारिश की बात कर रहे थे, अभी इस वक्त हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर, कोई परछाइयां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, थोड़ी हवाएं चल रही हैं वहां पर। प्रसन्ना, क्या लगता है अगर कहीं कोई बारिश की संभावना होती है तो क्या कुछ हो सकता है? Oh yes, it all depends on the nature, but as of now we've got some good cricket, and we just hope that good cricket should continue without any interruption. But that ball from Alzari Joseph was bowled at 146 kilometers per hour on the middle and leg stump, nicely flicked, but straight to the fielder there at short mid wicket inside the 30-yard circle. When Gill hits those flicks and the cut shots, you know that he is in form, and Team India would want him to be in good nick with the Asia Cup coming up. He needs to be in good form, and as we say that, outside the off stump, Shubman Gill was beaten, but lucky that it did not take the outside edge. Alzari Joseph is working up some serious pace here. बिल्कुल, और सीम के सहारे गेंद गिरकर बाहर की ओर निकली। दूर से बल्ला चलाना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बिल्कुल उस इलाके से होती हुई गेंद जैसे लगा वाइड होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बिल्कुल सिरे से होकर निकल गई, और पीछे पुरन ने अच्छा काम किया, अच्छा स्विंग देखने को मिला इस गेंद पर। तो 5 गेंदों पे इस पारी में, इस ओवर में जोसेफ के सिर्फ 1 रन आया है। आखिरी गेंद के साथ जोसेफ चले, इस बार गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, पूरी तरह से चकमा खा गए गिल, किसी तरह से संभाला उस गेंद को, ढकेला वापस बॉलर की दिशा में। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद, और फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया उसे जोसेफ ने, वापस पलट गए बॉलिंग मार्ग पे। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है और 26 स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पे वेस्ट इंडीज का। And also in T20 cricket, Ankit, now that it's an over break, we can discuss, see what real pace does. When Alzari Joseph bowls with that pace, 145, 146, 144, it's not easy to hit a fast bowler with that pace, and on this pitch where he's generating that pace on this pitch, which is full credit to him, because it's not easy. This pitch has been conducive to the spinners. The fast bowlers haven't had the going that easy, and on this pitch
he's generating some good pace. Akhil Hussain to bowl the fourth over. Left arm round the wicket, a slip in place. Surya Kumar Yadav this time sweeps right from the middle stump all along the carpet, but the fielder there at deep square leg will get just a single. He hits these sweep shots really well, sweetly timed. He moves on to 19. Gill on 5. Now this is a bowling partnership, one where Alzari Joseph is working some steam. Here Akhil Hussain from the other end is trying to spin the ball away from the right-handed batters. Flighted delivery once again, nicely bowled, tossing that delivery, inviting the batter to go for that drive. But Shubman Gill also smartly not going for that expansive drive, just playing that deftly towards long off for just a single. Smart batting this from both the batters. और किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए स्पिनर्स के विरुद्ध ये दोनों बल्लेबाज बता रहे हैं. 19 पे खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, 10 गेंदों का सामना किया है. स्वीप बड़ा अच्छा लगाते हैं. बाएं हाथ के स्पिनर्स के विरुद्ध भी वो अगेंस्ट द स्पिन खेलते हैं. This time, once again, against the spin, hit towards mid-wicket. The previous sweep shot was a lot finer. It was hit towards square leg, but this time a lot wider, hit towards mid-wicket. And that is why Surya Kumar Yadav gets that boundary. This is brilliant batting, because the previous sweep that he hit, he realized that he wanted to hit that a little front of square on the leg side. This time, he saw that acres of empty space in the mid-wicket area. Sweetly timed boundary. बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि बाएं हाथ के स्पिनर्स के खिलाफ भी ऑन साइड में स्ट्रोक्स खेलने से बिल्कुल हिचकते नहीं है. और शायद यही कारण है कि जब इस तरह का आत्मविश्वास हो आपके पास तो आप किसी तरह से किसी भी गेंदबाज को कभी भी परेशान कर सकते हैं. Batting well, batting on 23 in 11 balls. This time a short ball off the back foot, played towards mid-wicket. The fielder there this time has been positioned inside the 30-yard circle to just negate that sweep shot that Surya Kumar Yadav plays in front of square on the leg side towards that mid-wicket area. So that's a good field change that the captain has done. It is a fielder that will definitely save some runs for the West Indies. This time once again outside the off stump, this time swept away finer, but excellent fielding from Shimron Hetmeyer there at deep square leg, definitely saving 3 runs. He dived to his right and a good clean pickup on the bounce that he throws it back to the wicketkeeper. Just a single that Surya Kumar Yadav gets. Excellent fielding, this good commitment. The West Indian team are looking a completely different unit from what we saw in the one-day internationals. This time off the back foot, nicely pushed towards the long off area, but nicely cut by Romero Shepherd at short extra cover. Doesn't let that easy single go. 4 overs bowled, India chasing 160, a 33 for 1. And what we are seeing here, Ankit, is that the spinner, especially here Akhil Hussain, is trying to extract that turn. What Surya Kumar Yadav is doing, he's hitting that against the spin and not letting that ball bounce or turn, and that is why he's negating any turn that will be there. But Akhil Hussain is pulling that probing line and the length to the 2 right-handed batters. बिल्कुल. और आप देखें कि जो पहला ओवर था जिसमें 9 रन आए और उनके अखिल हुसैन के दूसरे ओवर में 7 रन आए, तो सिंगल्स भी ले रहे हैं, बीच बीच में अगर चौके आ जा रहे हैं तो उनसे भी रन बटोरे जा रहे हैं. फिलहाल ये 5वें ओवर की शुरुआत, शॉर्ट गेंद बैकफुट पे कट किया इस गेंद को, वहां डाइव लगाकर हेटमायर ने गेंद को फील्ड किया कवर पे, और इस बीच भागकर 1 रन पूरा करने का मौका वहां सूर्य कुमार यादव के पास. अलजारी जोसेफ गेंदबाजी करने के लिए आए. ये थोड़ी धीमी गति की गेंद, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की शॉर्ट गेंद, और उसे बैकफुट पे कट किया गया. तो आप जिसकी बात कर रहे थे फील्डिंग की वेस्ट इंडीज की, निश्चित ही ये भी एक चौका मैं कहूंगा हेटमायर ने बचाया. Good fielding this Shimron Hetmeyer. One on the leg side, one on the off side. 2 valiant saves. Every run saved is like a run scored. अलजारी जोसेफ ये गेंद शॉट उछाल कर खेलना चाहते थे, मौका बन सकता है, देखते हैं विकेट गिरता है या नहीं. और भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है. शुभमन गिल शॉर्ट गेंद को पुल करना चाहते थे और पूरी तरह से चूके वो बल्ला उनके हाथ में घूम गया, गेंद ऊंची हवा में चली गई और शॉर्ट मिड विकेट पे बढ़िया कैच लपका गया उनका. And Ankit, we were discussing the same thing. The pace that Alzari Joseph was generating in the first over, he was troubling the batters. Here once again, the pace of the short ball. Shubman Gill couldn't time that full shot. It took the top edge, and a good catch by Johnson Charles at short mid-wicket that he ran a few yards, covered good ground, and Shubman Gill now has to walk back. That's a big wicket. Both the opening batters, Ankit, are now back in the pavilion. Yashasvi Jaiswal out on
1. Shubman Gill out on 6. And inside the power play, India have lost 2 wickets. Both the openers back in the dugout. और शुभमन गिल को इससे पहले भी अलजारी जोसेफ आउट कर चुके हैं. इससे पिछले जो T20 मुकाबले में हमने देखा एक छक्का लगाया, उसके बाद वो आउट हो गए. तो इस मैच में भी वो शायद दिमाग में भी रहता होगा एक बल्लेबाज के तौर पे, एक ऐसी गेंद जिसको आप उस तरह से पुल शायद इस सिचुएशन पे ना कर पाए, और बल्ला भी थोड़ा सा घूम गया, पिच पे भी गेंद रुक कर आ रही है. सब कुछ ऐसा हुआ कि भारत को एक नुकसान हो गया. Oh, that's a big wicket. Alzari Joseph is working up some good pace here, and more than the pace, the lines that he's bowling outside the off stump and the length as well, he's keeping the batters in check by bowling those short balls and ensuring that he is bowling that with great control and pace as well. Shubman Gill once again not quite able to score the big runs in the shortest format of international cricket, and that is where India have lost another wicket, 34 for 2. और बारिश जिसकी हम बात कर रहे थे, उससे पहले 5 ओवर का खेल होना जरूरी है. इस बीच शानदार ड्राइव वहां तिलक वर्मा का, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. शुभमन गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और थोड़ी बूंदाबांदी भी हम देख रहे हैं. जैसा आप जानते हैं कि 5 ओवर तक कम से कम खेल हो जाना चाहिए, तब डीएलएस वहां पे काम करता है. और देखना ये होगा कि क्या 5 ओवर पहले खेल हो पाता है या नहीं. लेकिन भारत ने जो 2 विकेट गंवाए हैं, उसका भारत को कितना नुकसान होता है प्रसन्ना. But what a shot that was from Tilak Varma. He has looked a batter in sublime form. The best batter that we have seen in this T20 series. The first one was a stylish drive. This time a short ball makes some room for himself and hits that over third man for another boundary. 2 balls, 2 boundaries. What a start this is for the young Tilak Varma. कमाल का स्ट्रोक, स्टंप्स छोड़कर हट गए, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रूम बनाया और शॉर्ट गेंद पूरी तरह से, जिसको कहते हैं खुले मन से कट किया, और गेंद निकल गई पॉइंट के जो खिलाड़ी जो सिरे के अंदर खड़े थे उनके सर के ऊपर से एक टप्पे बाउंस करती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए. Good start this is, and Tilak Varma is bringing that youth, the exuberance of youth here in T20 international cricket, and that is what Tilak Varma has done for the Mumbai Indians, and now here he is doing for the Indians. इस बार ये पैड लाइंस की गेंद कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा वहां, इससे पहले कि मिड ऑन पे गेंद को फील किया जाए. 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे खुद को ले गए. भारत का स्कोर 43 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे. तो एक बात तो ये है कि डीएलएस में आपको एक सर्टेन रन बनाना ही होता है, तो वो भी उनके दिमाग में होगा, क्योंकि 2 विकेट भारत ने जल्दी जल्दी आज गंवा दिए हैं. शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वो भारत को अच्छी शुरुआत दे, जहां वेस्ट इंडीज ने 55 रन जोड़े थे प्रसन्ना, लेकिन भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत जल्द खो दिए. पारी के 5वें ओवर में ही खो दिए हैं, और अब सूर्य कुमार यादव आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे 25 की रन संख्या पे. अलजारी जोसेफ चले. इस बार ये पैड लाइंस की गेंद, उछाल ज्यादा इस गेंद में, फ्लिक करना चाहते थे, हैंडल से हाथ छूट गया, बल्ले के हैंडल से. हालांकि किसी तरह से खेल दिया वहां पे सूर्य कुमार यादव ने. इस गेंद पे कोई रन नहीं आया. 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत अब 43 2 विकेट के नुकसान पे. और अभी सभी श्रोताओं को बता दूं कि बारिश होगी तो भी रिजल्ट जरूर आएगा. Yes, because 5 overs have been bowled, and to constitute a match and a result, all that you need to know is that 5 overs have to be bowled. Now, 20 overs were bowled in the first innings, and that is why we are saying that in the second innings, a minimum of 5 overs need to be bowled, and 5 overs have been bowled. 43 for the loss of 2 wickets is what the scoreboard reads. The last over of the power play coming up. Where is India going? Team India here at this stage. West Indies were 32 without loss. India are 43 for 2. The DLS power score tells us 40. So India are way ahead as far as the DLS power score is to be considered. What we are trying to say is that after this, if there was no match to be held, India here, DLS power score says 40. India 43 for the loss of 2 wickets. So they seem to be in control. McCoy, who bowled the first over, considered 15 runs but picked up the wicket of Yashasvi Jaiswal, comes back to bowl the last over of the power play. Once again a change of pace.
Tilak Varma just slowly but surely settling into his T20 international career. Plays that defensively for a single. What a find he is, Ankit Tilak Varma. The way he started in the first match, 39 stylish runs. Then his first ever half century that he scored in the second T20 international. Impressed each and everyone with his stroke play. And here as well, 2 stylish shots to open his account. बिल्कुल, और वो जो रन था ना कि 40 बनाना है, ये भी उनके दिमाग में था कि वो 2 जल्दी स्ट्रोक्स खेल के उसको भी पार कराया, और अगर बारिश की कोई संभावना बनती वो अभी दिखाई दे नहीं रही है. अच्छी शुरुआत. मैं तो कहूंगा वर्ल्ड कप के लिए अच्छे कंटेंडर है. Oh, Tilak Varma, what is going to be the call? But this time, a short ball. Surya Kumar Yadav pulls that away. No fielder there at deep square leg. One bounce into the fence. Surya Kumar Yadav is dealing in boundaries. If he sees that ball shot, whether outside the off stump or the leg stump, he's going for the pull and hook shots. And here he gets another boundary. छोटी गेंद, और सबसे अच्छी बात है सूर्य कुमार यादव को वक्त लगता नहीं है, समय नहीं लगता, और जैसे ही देखा उन्होंने कि इस गेंद को पुल किया जा सकता है, बिल्कुल तैयार खड़े थे, कोई दुविधा उनके दिमाग में थी नहीं, और अच्छे तरीके से कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लगती हुई गेंद वहां बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए. 4 balls to go of the power play. Obed McCoy, left arm over the wicket, and that's played with a straight bat over long off for a 6. What a shot that is. That definitely has to be the shot of the day. A ball that was pitched on the middle and off, but with a straight bat, an extension of the arms, and an aerial off drive. A 6 of 81 meters. Class and elegance written all over it. बिल्कुल, बल्ले के बीचों बीच ले रहे हैं गेंद को, और इसी छक्के के साथ 35 पे पहुंच गया. मात्र 17 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल दुविधा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उनके दिमाग में नहीं है कि कौन सा स्ट्रोक कब खेलना है. Outside the off stump, this time cuts, but straight to the fielder there at deep backward point. Will be just a single for Surya Kumar Yadav. He is batting well. He is now batting on 36 in 18 balls. So that's a straight mathematical calculation of a strike rate of 200 that he is batting at, with 4 boundaries and 2 really long sixes. The first 6 that he hit over fine leg was on the grass banks. That was such a long 6 that he hit, and Surya Kumar Yadav right from the first ball has looked in great control. Tilak Varma, this time a short ball pulled away. The fielder there at square leg will not be able to stop that. In the gap between square leg and short mid wicket, once again another boundary. That's the 3rd boundary of Tilak Varma's bat. 3 boundaries in just 5 deliveries that he has faced. बिल्कुल, 16 रन भारत के लिए आ चुके हैं इन 5 गेंदों पे, और दोनों ही बल्लेबाज, हालांकि सूर्य कुमार यादव ने ज्यादा रन बटोरे हैं, लेकिन तिलक वर्मा भी पूरे रंग में दिखाई दे रहे हैं. Both of them have batted for so many matches for the Mumbai Indians. Both of them have a good understanding. They know each other. Surya Kumar Yadav, the senior professional here, will be guiding Tilak Varma, because with this kind of start, you just cannot let it go away. A short ball just opening the face of the bat. There is Tilak Varma, plays that towards square third man for a single, and that in the end eventually is a good power play for India. India have lost 2 wickets, Ankit, no doubt about it. But this is the way you play the shortest format of international cricket. You will lose wickets, but go for the runs. Because when you're chasing or you're setting a target, runs on the board is all that matters. And here, at the end of the power play, India have scored 60 runs on this pitch at a run rate of 10 runs per over, which can be termed as a flying start. बिल्कुल, और ये जानते हुए कि इस विकेट पे स्पिनर को भी बहुत मदद है, उनके भी 2 ओवर करवा लिए यहाँ पर कप्तान पॉवेल ने, तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ 6 ओवर बचे हैं जो स्पिनर से वो अधिकतम करा सकते हैं इस पारी में. 14 ओवर का जो खेल बचा है, भारत को इन 14 ओवर्स में सिर्फ 100 रन बनाने हैं. 8 विकेट भारत के पास है, तो ऐसी स्थिति में ये पिच बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप के विकेटों की तरह है, जहां पे हम देखते हैं स्पिनर्स को ही ज्यादा मदद मिलती है. और जैसा हम कह रहे थे, रॉस्टन चेस जो उनके एक ऑलराउंडर के तौर पे इस मुकाबले में खेल रहे हैं, उनको बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. ऑफ स्पिन करते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा, स्ट्राइक लेंगे उनके खिलाफ. 6 गेंदों पे 15 रन बनाकर खेल रहे हैं. नजदीक में कोई भी खिलाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कैचिंग वहां पर. एक फील्डर ऑन साइड में दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग पर है, जबकि 3 फील्डर ऑफ साइड में हम देख पा रहे हैं दायरे के अंदर. बाकी सभी फील्डर्स को बाउंड्री पर रखा गया है.
रॉस्टन चेस चले और इस बार ये मिडिल स्टंप से गिरकर गेंद थोड़ी बाहर की ओर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद के ठीक पीछे गए, सुरक्षात्मक तरीके से इस 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद को खेला और कोई रन नहीं। रॉस्टन चेस टेस्ट क्रिकेट में हमने इनको देखा है, वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन T20 में इनका योगदान अभी तक उस तरह का नहीं रहा है कि ये अपनी छाप छोड़ पाए। अपना पहला ओवर कर रहे हैं। भारत ने पहले पावर प्ले में 60 रन बना लिए। एक ही पावर प्ले होता है। थोड़ी देर पहले प्रसन्ना हम देख रहे थे, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिच उसकी वजह से थोड़ा आसान हो गई है बल्लेबाजी करने के लिए? Yes, it looks like, because the ball is coming out of the bat really nicely. This time a flighted delivery, defensively played by Tilak Varma, but it's a good matchup. An off spinner against a left-handed batter. We have seen that off spinners will definitely create that good angle where the ball will spin away from the left-handed batters. चेस चले। इस बार ये ओवर पिच गेंद कलाइयों के सहारे इस गेंद को फुल लेंथ पे लेते हुए फ्लिक किया ऑन साइड में। एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। प्रसन्ना ये भी तो है कि तिलक वर्मा खुद ऑफ स्पिन करते हैं, उनको भी पता है दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर हैं कि किस तरह से खेलना चाहिए। और अब देखना होगा सूर्य कुमार यादव जो कि 36 रन पे खेल रहे हैं। 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। स्ट्राइक लेंगे और चेस थोड़ा सा फील्ड वहां चेंज कर रहे हैं। कोई स्लिप अभी भी नहीं है। आक्रामक सोच यहां दिखाई नहीं दे रही है कप्तान की, जबकि ये 7वां ओवर फेंका जा रहा है। भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द ही गवा दिए। चेस चले इस बार ये गेंद और ऑन दी अप ऑन द राइज स्ट्रोक्स खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव भी। फ्रंट फुट पे ही इस गेंद को पिक किया, ऑफ साइड से ऑन साइड में कलाइयों के सहारे मोड़ा, मिड विकेट की तरफ। एक रन आ गया है उनके खाते में भी। और अब भारत का स्कोर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कुछ अलग ही दिख रहा है अब ये पिच। प्रसन्ना ऑन द राइज स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। And both the batters are batting really well. Because they are in good form, they are making this pitch look so easy, which in fact is not as easy as it looks. And that's another no ball. That's the second no ball that the West Indian spinners have bowled. Akil Hussain bowled the first no ball. On the free hit, Surya Kumar Yadav hit him for a boundary. Now, the third umpire, Leslie Reifer, says that this is a no ball bowled by another spinner, Roston Chase. So that's a free hit, and it's going to be Tilak Varma to face the free hit. ये उनकी तीसरी गेंद थी। 3 गेंदों के बाद उन्होंने ये नो बॉल किया है। और अब देखना होगा कि क्या जो फ्री हिट का मौका मिला है तिलक वर्मा को, वो इसको भुना पाते हैं या नहीं। फील्ड में थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं। रॉस्टन चेस चले, ओ बहुत अच्छी गेंद, फुल टॉस, और उसको भुना नहीं पाए। 1 रन ही मिला इस गेंद पर। और मैं कहूंगा कि भरपाई कर ली उन्होंने अपने उस नो बॉल की। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद करके। He had fired it in, Ankit. He just fired it in, ensuring that there's no flight, no room, and he just wanted to put that in the block hole, and he did that successfully. बिल्कुल तेज गति की ऑफ स्टंप के ऊपर लो फुल टॉस थी वो। और इस बीच रॉस्टन चेस की गेंद इस बार फुल टॉस पे लेके गैप में खेल दिया है सूर्य कुमार यादव ने। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से निकाला। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। 41 पे पहुंच गए 20 गेंदों पे मात्र। और भारत का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 68 2 विकेट के नुकसान पे। Today, Surya Kumar Yadav has got so many gifts. This was another one. Full toss in the gap that he just had to place it. And the form that he is in, he can do that with some great ease. The fielder there at mid-wicket and long on had no chance whatsoever. That's another boundary. आखिरी गेंद के साथ रॉस्टन चेस, और इस बार फुल लेंथ की इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों के सहारे मोड़ते हुए ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में। इससे पहले गेंद को फील किया जाए, थ्रो किया जाए। इस गेंद पर भी 1 रन। भारत 69 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद। तो रनों की औसत लगभग 10 की ही है। और जीतने के लिए भारत को सिर्फ अब यहां से 91 रनों की और जरूरत है, जबकि 78 गेंदों का खेल बचा है। प्रसन्ना, Yes, and also Ankit, what needs to be appreciated here is the intention with which the Indian batters have approached this chase. Because sometimes what happens is you tend to get a little over defensive. You know you're trailing in the series 0-2. You've lost both your first T20 international matches. You need to win this to stay alive. And at times you just tend to go in that shell. But India have not done that. At this stage, after 7 overs, West Indies were 50 without loss. And India are 69 for 2. The DLS power score tells us 52. So India are well and strongly in control of the chase. In case there had to be a rain interruption and no further play is possible. But at the moment, there is no rain. That's the good news. As we say that,
The moment we gave that update, what we can see here is a slight drizzle. Short ball outside the off stump. Surya Kumar Yadav just had to open the face of the bat. Romario Shepherd starts his first over. The third man inside the circle. Once again, no chance in the gap. Another boundary for Surya Kumar Yadav. धीमी गति की गेंद और उस गेंद को कट करना चाहते थे, अंदरूनी सिरा लिया, उस तरह से स्ट्रोक खेल नहीं पाए जैसा वो चाहते थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन किस्मत आज उनके साथ है जैसा आप कह रहे हैं, और शॉट थर्ड मैन के फील्डर के दायरे के अंदर में रहने की वजह से जैसे ही गेंद उनको बीट की निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर. The intent that we've been talking of, when you go for the shots, they will come off. Once again, a full toss just opens the face of the bat. The backward point will have no chance for the sweeper cover. Another boundary, and Surya Kumar Yadav brings up his half century in just 23 balls. What a knock this is! Chasing a target of 160, India trailing 0-2. They needed some firepower, and Surya Kumar Yadav does that with a strike rate of 217.39. 7 boundaries and 2 sixes in just 23 balls. Surya Kumar Yadav brings up a scintillating half century. कमाल की पारी खेली, और जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो वो जो एक पुल शॉट खेला था, उसके बाद एक स्ट्रेट ड्राइव हमने देखा, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए स्ट्रोक्स खेलना शुरू किया उन्होंने, तो कमाल की बल्लेबाजी. फिर स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप शॉट जहां जरूरत पड़ी उस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की है, और शायद यही कारण है भारत इस समय 10 के ऊपर के रन गति से बल्लेबाजी कर रहा है. Romario Shepherd not giving any pace on the ball, but it is not working for him because Surya Kumar Yadav knows that this is what Shepherd is going to bowl, a speed of 110 kilometers per hour. So he's just not giving any pace, but Surya Kumar Yadav knows that this is what Shepherd is going to bowl. The first 3 balls, 2 hit for a boundary. The third one, a dot ball. Surya Kumar Yadav now has raced off to 15. Just 24 balls, 7.3 overs. India 77 for the loss of 2 wickets. Here comes Shepherd, right arm over the wicket, bowling to Surya Kumar Yadav. Once again, a slower one. The ball coming so slowly off the pitch. 2 dot balls defensively played by Surya Kumar Yadav. और जान गए थे इस गेंद को कि धीमी गति की गेंद है. इंतजार किया, भले ही स्ट्रोक मेड नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी समय में सीधे बल्ले से डिफेंस भर किया. इससे भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका. Yes, definitely. But what an innings this has been. 25 balls, 50 not out with 7 stylish boundaries and 2 towering sixes. The one that was hit off the short ball over fine leg on the grass banks is unforgettable. Here Shepherd bowls literally from behind the umpire, not reaching the popping crease, bowling and delivering that ball literally from next to where the umpire is. That is where his delivery stride was. You see spinners do this to ensure that the flight and there's some variation, but here Shepherd literally bowled from next to the non-striking end umpire, and that is what is something which is a very, very unusual scenario where the umpire is standing. Right next to him is where the delivery stride was of Romario Shepherd. This time round the wicket, nicely clipped off the middle and leg stump towards mid wicket by Tilak Varma. He'll keep strike, 8 overs bowled. India are looking strong. They are 79 for the loss of 2 wickets, exactly at the halfway stage that Team India are with 12 overs to go, which is an indication, Ankit, that the chase is on. And Surya Kumar Yadav along with Tilak Varma are motoring along, and they need to carry this good work to bring India back in the series and register their first win in this series. बिल्कुल, और आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रोमारियो शेफर्ड जो एम्पायर के बिल्कुल पास से गेंद उन्होंने कर दी, कम से कम 25 गज मान के चल रहे थे कि विकेट उतनी बड़ी है. अक्सर हमने भुवनेश्वर कुमार को भी ऐसा करते देखा है कि पीछे से ही गेंद कर लेते हैं, 3-4 गज पहले ही वो गेंद छोड़ देते हैं, और ये अनुमति है फास्ट बॉलर्स को भी और स्पिनर को भी. आप पीछे से कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. और एक और बात रही उस गेंद पे, धीमी गति की गेंद थी, ऐसा नहीं था तेज गति की गेंद हो. 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद है. और अब फिर से रॉस्टन चेस एक तरफ से गेंदबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट गेंद कट किया बैकफुट पे इस गेंद को तिलक वर्मा ने, और इससे पहले कि डीप कवर से गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन बनाने का मौका. तो अकील हुसैन ने जो 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमें कुछ 16 रन उन्होंने खर्च किए, उसके बाद हमने ये देखा कि उनको अब तक गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया गया है कप्तान के द्वारा. और चेस एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि पार्ट टाइमर रहे हैं. जब टेस्ट मैचेस में हमने उनको देखा था, अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं. ये उनका दूसरा ओवर है. बल्लेबाजी का आज उन्हें मौका नहीं मिला.
लेकिन गेंदबाजी से वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के लिए ओवर द विकेट ये गेंद पैड लाइन स्पेस गेंद को फ्लिक किया गया और इससे पहले कि 30 गज के सिरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन बनाने का मौका यादव के पास। 52 पे पहुंच गए, 81 स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पे। लगभग इतने ही रन और चाहिए, 79 रन टू विन इंडिया। और अब बची हुई जो 70 गेंदें हैं उसमें देखना होगा कैसे 1-1, 2-2 रन से ही काम चलाते हैं। इस बीच अगली गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा और इससे पहले शॉट मिड विकेट पर खुद गेंदबाज भाग के जाएं, गेंद को फील्ड करें, 1 रन बनाने का मौका तिलक वर्मा के पास। 20 पे पहुंच गए हैं तिलक वर्मा और 52 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। हम चाहेंगे हमारे स्कोरर हमें बताएं कि शुभमन गिल जब आउट हुए थे तो भारत का स्कोर कितना था। फिलहाल 160 भारत को बनाने हैं। रॉस्टन चेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। गिल जब आउट हुए तो 34 स्कोर था, तो धीरे धीरे ये पार्टनरशिप अब 50 के पास पहुंचती हुई। कलाइयों का इस्तेमाल किया फिर से सूर्य कुमार यादव ने और ये टर्न होती हुई गेंद ऑफ स्टंप से अंदर आती गेंद को फ्लिक किया और उसे इससे पहले डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्ड किया जाए। 1 रन, 1-1 रन बन रहे हैं प्रसन्ना इस ओवर में। And they're taking it easy because in the sense, when I say easy, it's not about complacency. They know that they are in control of the chase. The bowler is also chase. And they're chasing this target of 160 very smartly, not going for any risky shots. This time, once again, a short ball, nicely played towards square leg without any risks. They're getting all singles, 5 singles here in this over with 1 ball to go. और इसी के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, केवल 28 गेंदों में। और इसमें 28 रन 14 गेंदों पे सूर्य कुमार यादव के हैं, 21 रन तिलक वर्मा ने बनाए हैं। 14 गेंदों का तिलक वर्मा ने सामना किया है। अब आखिरी गेंद के साथ रॉस्टन चेस ऑफ स्पिन करते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं सूर्य कुमार यादव। ओवर द विकेट चेस की गेंद और इस बार फ्रंट फुट पे ही इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद में शायद टर्न उतना ज्यादा था, बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं, उधर उसे फील्ड कर लिया गया फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज के द्वारा। इस आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं। 84 स्कोर है भारत का 2 विकेट के नुकसान पे। प्रसन्ना, क्या सिचुएशन यहां से लग रहा है? 11 ओवर का खेल अभी बचा है। India looking in really good control here in this T20 international series, trailing 0-2, wanting to stay alive in the 5-match series and as of now, India 9 overs 84 for the loss of 2 wickets with Surya Kumar Yadav looking in really sublime form, batting on 53 in just 29 balls. And we must also appreciate Tilak Varma, the way he is giving Surya Kumar Yadav the strike. He knows that Surya Kumar Yadav is capable of hitting the big ones. He's looking in good touch, scoring some good runs, big shots, and he doesn't want to go for the big ones. He's ensuring that Surya Kumar Yadav gets the strike, and whenever there's a loose delivery that is on offer, Tilak Varma is ensuring that big runs are scored off that. Round the wicket that Shepherd is bowling. This time some pace that he bowls with. Played with a straight bat towards cover by Tilak Varma. No run taken. Varma batting on 21. Surya Kumar Yadav batting on 53. The 10th over in progress. India chasing 160. India are 84 for the loss of 2 wickets. Romero Shepherd conceded 10 runs in the first over that he bowled, and there were 2 boundaries of the very first 2 balls that were hit by Surya Kumar Yadav. He was bowling all slower ones to Surya Kumar Yadav. This time round the wicket, fires it in on the pads of Tilak Varma. He plays that once again with a straight bat towards wideish long on, gets a single. And as we say that, there's a drizzle in Guyana at the National Stadium, Providence in Guyana, and there's sunshine as well. In the midst of the sun, we would want to tell all our listeners on Akashwani that there is a drizzle as well. Even the groundsmen with the covers are surprised. The second time that this has happened, it happened in the first innings as well when West Indies were batting, that the groundsmen were ready with the covers. This time Surya Kumar Yadav hits his trademark customary shot over fine leg, which is a shot that is to be called as the Surya Kumar Yadav shot over fine leg, scoops that for another 6. कमाल की टाइमिंग, और देखिए किस तरह से जब वो स्ट्रोक्स खेलने गए बिल्कुल गिर गए वहां पर, और अपने आप को गिरते पड़ते किसी तरह से पिक करते हुए ये 59 मीटर का बहुत बड़ा छक्का नहीं है, बिहाइंड द विकेट कहेंगे, पीछे की ओर खेल दिया 6 रन के लिए रोमारियो शेफर्ड की इस गेंद को। And our statistician Manoj Kumar tells us that this is Surya Kumar Yadav's 106
in T20 international cricket. Oh, that's a big achievement. He's batting on 59. Thank you so much, Mukesh Kumar, for that stat. 11 boundaries and 3 sixes that India have hit. All 3 have come off Surya Kumar Yadav's bat. Short ball, third man and the backward point inside the 30-yard circle. And all that Surya Kumar Yadav had to do was just get that elevation over the backward point fielder behind square on the offside. A slow one. Once again, a boundary. 6 followed by a boundary. India now motoring along, cruising along. बिल्कुल खराब गेंद और उसको सही नसीहत दी गई सूर्य कुमार यादव के द्वारा। और एक बात तो बहुत क्लियर है ना, जब से बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी, तब से बल्लेबाजी बहुत आसान हो गई। शायद वो जो पानी थोड़ा थोड़ा वहां गिर रहा है पिच पे, वो जो गेंद रुक रही थी वो रुकना अब बंद हो गया है। Surya Kumar Yadav is shining here. So is the sun now with that shot hit towards long on for a single. Scoreboard moves on to 96 and that is what is the beauty of nature. We were talking about that phenomena where it was drizzling. At the same time there was sun. And that is what just now happened. But now the rains seem to have stopped. There's bright sunshine. There's Surya also who's batting, which translates to sun. Surya Kumar Yadav is shining and so is Tilak Varma. Tilak Varma batting on 22. Surya Kumar Yadav batting on 64. India 96 for 2, exactly at the halfway stage with 1 ball to go. Tilak Varma plays that with the opened face bat. A slight misfield there at backward point will result in an easy single for Tilak Varma. He will keep strike. 10 overs have been bowled and at the end of 10 overs, India chasing 160 are 97 for the loss of 2 wickets with 63 required in 60 balls. Ankit, now it's time for drinks in this third T20 international, which gives us a little scope to just analyze where and how this match has so far transcended. It was West Indies who won the toss, elected to bat first. They got off to a fabulous start where Kyle Mayers and Brendan King put on 55 runs for the first wicket, but Kyle Mayers got out there. But after that, they did not get a big partnership. The first wicket fell on 55, Kyle Mayers got out. Second on 75 when Charles got out. Third on 105 when Puran got out. Fourth on 106 when King got out. And fifth on 123 when Hetmeyer got out. But after that, it was Roman Powell who batted really well and he finished the innings with a flurry of boundaries and sixes. 3 sixes and 1 boundary. 19 balls 40, which propelled the score towards that 160 run mark. India then chasing 160, lost Yashasvi Jaiswal very early, could score only 1 run, lost Shubman Gill as well. But when the scoreboard read 34 for 2, when India lost the wicket of Shubman Gill, after that, it has been the Surya and Tilak show here in Guyana. Surya Kumar Yadav batting on 64, Tilak Varma batting on 23. कमाल की बल्लेबाजी हुई है दोनों से और इस पारी में भारत की तरफ से अब तक 3 छक्के लगे हैं। वो तीनों ही छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आए हैं, जबकि कुल मिलाकर 12 चौके लगे हैं इस पारी में, जिसमें 8 सूर्य कुमार यादव ने लगाए हैं भारत के लिए। 64 रन बनाकर खेल रहे हैं 32 गेंदों का सामना करके। और तिलक वर्मा ने 3 चौके लगाए हैं, 17 गेंदों का सामना किया है, 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान 63 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। दूसरा जब विकेट गिरा था भारत का स्कोर 34 रन था और जैसा आप जानते हैं कि भारत को सिर्फ 160 बनाने हैं, मतलब कुल 63 रन और बनाने हैं, जबकि 10 ओवर का खेल बचा है, मतलब 6.30 के औसत से अब भारत को ये रन चेस कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा नहीं है, कहते हैं 6 के पास अगर औसत हो चेस के दौरान T20 में तो बड़ा सहज होता है कोई भी टीम, और टीम के कप्तान भी सहज होते हैं। लेकिन आज जिस तरह से गेंदबाजी हुई है उसके ऊपर जरा बात करते हैं वेस्ट इंडीज की। ऑबिड मौकाए ने 2 ओवर में 32 रन दिए, उन्हें 1 विकेट मिला था। उसके अलावा अकील हुसैन जो कि ट्रम्प कार्ड है टीम के गेंदबाज के तौर पे, 2 ओवर में 16 रन खर्च किए उन्होंने। रॉस्टन चेस ने 2 ओवर में 14 रन दिए। तो जो 2 स्पिनर्स हैं प्रमुख, उन्होंने 4 ओवर में कुल मिलाकर 30 रन दे चुके हैं अब तक। और अल्जारी जोसेफ ने 2 ओवर में 11 रन देके 1 सफलता हासिल की, गिल को उन्होंने आउट किया। रोमारियो शेफर्ड महंगे साबित हुए हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट उनके काम नहीं आ पाई, चाहे गेंद को पीछे करने की कोशिश हो या फॉलो थ्रू में कुछ चेंज करने की कोशिश हो। 2 ओवर में उन्होंने 23 रन खर्च किए हैं। प्रसन्ना, स्पिनर्स का जो रोल रहा है पहले इनिंग्स में हमने देखा भारत के तीनों स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की और अब तक 4 ओवर में अकील हुसैन और रॉस्टन चेस ने कुल मिलाकर 30 रन दिए हैं। And they haven't picked up a wicket. बिल्कुल।
That is what is the concern. 63 to win in 60 balls. The 11th over coming up. Tilak Varma to bowl to face Roston Chase. Varma batting on 23, Suryakumar Yadav batting on 64. And after drinks, we'll resume play once again. रॉस्टन चेस चले और ये गेंद टर्न में इस बार चेस के गेंद में मिला। टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली और जैसा होता है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हम देखते हैं, लेकिन ये गेंद तो कुछ ज्यादा ही बाहर निकल गई, ऑफ स्टंप के बाहर गिरी और ज्यादा बाहर निकलती चली गई। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। भारत को एक और अतिरिक्त रन मिल गया है। इस बीच ये गेंद दोबारा से इस बार टर्न भी मिला, गेंद फंस कर आई बल्ले पे। इस गेंद को ऑन साइड में खेला, पंच के अंदाज में ढकेला, इससे पहले कि लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। एक रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गया वहां तिलक वर्मा। अब भारत 99 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये रन का जो स्कोर है 99 डराता है हमें। जल्दी से इसे 100 कर लें। सूर्यकुमार यादव स्ट्राइक लेंगे। 32 गेंदों पे 64 रन बनाकर खेल रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से और रॉस्टन चेस गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट चले। इस बार ये गेंद बहुत अच्छा टर्न देखने को मिला वहां से और गिल्लियां बिखेरी वहां निकोलस पूरन ने, लेकिन कोई खतरा नहीं। बाल बाल बचे सूर्यकुमार यादव। वही मैं 99 की बात कर रहा था प्रसन्न। Oh yes, because that is what happens whenever a batter is batting on 99 or a team is on 99. Team relatively lesser pressure, but when a batter is on 99, all hell breaks loose. इस बीच ये गेंद फ्लिक किया पैर लाइंस की इस गेंद को और 1 रन के साथ भारत के 100 रन पूरे हुए और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 60 रनों की जरूरत है। 57 गेंदों का खेल बचा है गयाना के इस मैदान पे। दूसरा जो T20 मुकाबला खेला गया था, बिल्कुल भारत के मुंह में आ गई थी वो जीत और वहां से फिसल गई। 100 रन पूरे होने के बाद अब 65 पे सूर्यकुमार यादव पहुंच गए। 34 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और 24 की रन संख्या पे तिलक वर्मा स्ट्राइक लेते हुए। रॉस्टन चेस की ये गेंद बैकफुट पे जाके कलाइयों के सहारे मोड़ा इस गेंद को और इससे पहले कि तेजी के साथ उस गेंद को फील्ड किया जाए वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे तिलक वर्मा, मना किया गया सूर्यकुमार यादव के द्वारा और इस गेंद पर से एक ही रन आया। 101 भारत 2 विकेट के नुकसान पे। तिलक वर्मा अब तक 3 चौके लगा चुके हैं अपने पारी में और सूर्यकुमार यादव देखते हैं कि क्या रणनीति अपनाते हैं या स्पिनर का ये ओवर ऐसे ही ले रहे हैं ताकि सिंगल से ही किसी तरह से वो दबाव ना बनने दिया जाए विकेट गिरने का। लेकिन सूर्या के मन में कुछ और है। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को स्वीप कर दिया। 4 रनों के लिए किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। What a shot that is. Now there was a fielder there at deep square leg, a fielder there at short fine leg. The ball wasn't on the middle and leg stump. The ball from Roston Chase was literally outside the off stump. He reached to the pitch of the ball and then he literally hit that behind square on the leg side for a boundary. This is top class batting in T20 internationals from Suryakumar Yadav, who has moved on to 69. बिल्कुल ये आखिरी गेंद के साथ रॉस्टन चेस ओवर द विकेट चले। ये गेंद पैर लाइंस पे इस बार फ्लिक किया गया इसे, इससे पहले कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। आराम से 1 रन अपने खाते में जोड़ गए वहां सूर्यकुमार यादव। 70 पे खुद का स्कोर पहुंचाया और भारत 106 2 विकेट के नुकसान पे। तो प्रसन्ना अब सिर्फ 54 रन चाहिए और 54 गेंदें बची हैं, मतलब 6 रन पर ओवर। अब तो इस इक्वेशन बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है। Run a ball equation possible because of the way Suryakumar Yadav has batted, and also we cannot ignore the fact that Tilak Varma has batted so sensibly. He knows that Suryakumar Yadav is in great rhythm. That is what Tilak Varma is also doing, ensuring that the strike is rotated, runs are coming at a thick and fast pace, and that is why now India in firm control of this 3rd T20 international in bright sunshine here at the National Stadium, Providence, Guyana. 54 to win in 54 balls. Suryakumar Yadav batting on 70 in just 36 balls with a strike rate of 194.44 with 9 boundaries and 3 sixes. The DLS power score tells us 78. So India well and truly in good control of this chase. Here comes Akil Hussain to bowl his 3rd over. Left arm round the wicket. A slip in place to Suryakumar Yadav. Inside out with the spin over the short extra cover fielder towards deep extra cover for another boundary. That's boundary number 10 of the shining bat of Suryakumar Yadav. भारत के सूर्य के सामने वेस्ट इंडीज के सितारों की चमक अब फीकी पड़ रही है। जिस तरह से इस गेंद पे इनसाइड आउट बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ स्टंप्स छोड़कर बिल्कुल निर्भय बनकर उछाल कर खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। What batting this is. Brilliant, scintillating, fabulous, amazing.
how many adjectives should we use to describe this knock from Surya Kumar Yadav on this pitch where the ball is not coming onto the bat that easily? But yes, when it drizzled, when it rained for a couple of overs, it did not rain heavily. The ball might have got wet, way difficult for the spinners also to grip the ball. The pitch also then doesn't assist. So far, so good for Team India when they are striving to stay alive in this 5-match T20 international series. This time the ball that keeps a little low off the back foot, safely played by Surya Kumar Yadav. He is choosing his deliveries when he wants to attack. A good crowd that has turned up here at the National Stadium, Providence, Guyana, and a good support for Team India. Wherever they go, Indian team gets all the strong support that it needs, whether it's Test cricket, One-Day cricket, T20 cricket. And when Surya Kumar Yadav bats like this, it is just a performance on display. This time played with soft hands in the gap between backward point and short extra cover for a single. This partnership worth 77 runs in 45 balls. कमाल की साझेदारी, और जिस तरह से आपने तिलक वर्मा की बात की है, इक्वली उनको भी आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस पार्टनरशिप में, 25 पे ही खेल रहे हैं, उतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है हमें, लेकिन दात उनकी भी देनी पड़ेगी. He is a find. He is a find in this T20 international series for Team India. Definitely in the middle order, a player to watch out for. This time, just opening the face of the bat, plays that towards short third man. Tilak Varma gets that easy single. India need 48 to win from 49 balls. Tilak Varma batting on 26. Surya Kumar Yadav batting on 75. This partnership is taking India closer to that target of 160. One ball to go off the 12th over. India need 48 to win. 49 balls to go. Akil Hussain bowling his third over with one ball to go. Left arm round the wicket. This time a flatter trajectory. Surya Kumar Yadav just paddles that outside the off stump, but he hits that towards fine leg. The fielder there at deep square leg, Alzari Joseph, will cut it off. 2 runs that Surya Kumar Yadav gets. 12 overs have been bowled by the West Indies team. India are 114 for 2. India need 46 to win in 48 balls. It gives us a chance to quickly discuss a topic, Ankit. India looking for a middle order batter at number 4 in the One-Day Internationals, because that's the first World Cup that will coming up. Then we have the T20 World Cup. Tilak Varma is definitely making a strong claim that can he find a place in that middle order. It's too early, definitely too early, but he is a promising prospect. Whether against the spinners or against the fast bowlers, Tilak Varma is looking in great control with his batting. बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने पिछली पारी में अर्धशतक लगाया, पिछले जो दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. और ऑफ स्पिनर भी हैं भारतीय टीम के पास. जैसा आप जानते हैं, रविचंद्रन अश्विन ही एकमात्र ऐसे ऑफ स्पिनर हैं जो वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है. उन्होंने खुद ये कहा है कि तिलक वर्मा कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं, और एक अच्छी खासी ऑफ स्पिन का अगर ऑप्शन आपको ये दे रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छा ऑफ स्पिन कर लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि बाकी कोई भी टॉप ऑर्डर में बैट्समैन ऐसा नहीं. या तो आप अश्विन को खिलाइए, वरना तिलक वर्मा को खिला सकती है भारतीय टीम. इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई, और अब स्पिन में देखा कि कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है. परिवर्तन के तौर पे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के पास गए हैं वहां पॉवेल कप्तान, और अलजारी जोसेफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. पहली गेंद पैड लाइंस पे उसे फ्लिक किया गया, 1 रन वहां मिला. हालांकि ये गेंद पैड पे लगी थी, तो लेग बाई का ये रन. और अब सूर्य कुमार यादव 77 की रन संख्या पे स्ट्राइक लेंगे. 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. जीत के लिए भारत को 45 रन बनाने हैं. 47 गेंदें बची हैं. सूर्य कुमार यादव को अपने शतक के लिए 23 रन बनाने हैं, तो वो भी उनके दिमाग में होगा कि आज मौका है तो क्यों ना शतक बनाया जाए. अलजारी जोसेफ तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए दौड़ना शुरू किया. ये गेंद और उछाल कर खेला, कमाल की टाइमिंग वहां सूर्य कुमार यादव की, फ्लिक कर दिया इस गेंद को. कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास. 6 रन. What a shot once again, batting of the highest class. The ball that was fuller in pitch. There was a fielder there at square leg and mid wicket, but just the flick of the wrist and the ball and the shot had Surya Kumar Yadav written all over it. Because if there's one batter in T20 international cricket who can hit that shot, it is Surya Kumar Yadav. 69 meters. He just picked it up
off the middle stump and hit it over long on, timed to the best of his ability. और थोड़ा सा वो हेलीकॉप्टर जो जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जो धोनी खेलते थे उसका भी थोड़ा हमने देखा कि वो फ्लो आया, बल्ले को पूरी पीठ के पीछे से लेकर आए और जब स्ट्रोक वो फ्लिक शॉट खेला बल्ला पीछे चला गया उनका। कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स तो सूर्य कुमार यादव ही खेल सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप करना हो, पैड लाइन से फ्लिक करना हो। इस अगली गेंद और इस गेंद को वहां खेलने की कोशिश की गई, वापस बॉलर की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। 121 भारत 2 विकेट के नुकसान पे। अब जीत के लिए सिर्फ यहां से 39 रन चाहिए, जबकि जोसेफ अब गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका तीसरा ओवर है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चले, इस बार फुल टॉस और खराब गेंद, लेकिन किस्मत इस बार सूर्य कुमार यादव के साथ नहीं और सीधे वहां कैच कर लिए गए फाइन लेग पे। प्रसन्ना, ये क्या हुआ? Yes, not the best of deliveries to get a wicket, but sometimes this is what happens. You try to bowl to the best of your abilities, you don't get a wicket, you bowl a full toss on the pads, on the leg side. Surya Kumar Yadav could have hit it anywhere that he wanted, but straight to the fielder there at fine leg, flat batted that he had hit that, and straight into the chest, and that is where it was Brendan King who gleefully accepted that. But Surya Kumar Yadav gets a standing ovation for a brilliant knock of 83 in just 44 balls with 10 boundaries and 4 sixes. India 121 for 3 with 39 to win in 44 balls. Surya Kumar Yadav has ensured that India stay in the hunt while chasing a stiff target. When we saw the first innings on this pitch of 160, Surya Kumar Yadav has played an amazing knock here in Guyana. और वापसी की है उन्होंने। बहुत अरसा मैं कहूंगा हो गया था उनके बल्ले से कोई हमने इस तरह की पारी नहीं देखी थी। उन्हें वनडेज में भी मौका मिला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पे भी वो कमाल नहीं दिखा पाए, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई उनके बल्ले से। लेकिन आज मौका मिला और परिस्थितियां ऐसी बनी, 83 रनों की एक ऐसी पारी जो याद रखेंगे। भारत को एक तरह से लाके खड़ा किया इस सीरीज में। और अब भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सहारे उसे मोड़ा था और 1 सेकंड का भी मुझे लगता है फील्डर को चांस मिला नहीं था वहां पे। वो हिल भी नहीं सकते थे अगर गेंद दाएं बाएं कहीं भी जाती वहां पे, लेकिन गेंद सीधे उन्हीं को ढूंढ कर आ रही थी, सीधे उनके सीने पे आई, बस हाथ को उठा के उसके सामने रखा और कैच लपक लिया। A good catch because he didn't have to move. It was right in his hands. He accepted it. But what a knock. What a knock from Surya Kumar Yadav. 83 runs of the highest class in just 44 balls, 10 boundaries and 4 sixes. He has stamped his authority on this third T20 international. हार्दिक पांड्या पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार इस पारी में। अलजारी जोसेफ अंपायर को पार करते हुए शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, इसे वहां पे कमाल के टाइमिंग के साथ नीचे रखते हुए पुल किया हार्दिक पांड्या ने। और इससे पहले कि डीप मिड विकेट से गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन पूरा कर लिया और अपना खाता खोला। भारत 122 अब 3 विकेट के नुकसान पे। और ऐसी स्थिति थी जब वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी कर रही थी, 1 2 3 4 ऐसा कुछ बना था। भारत के लिए तो वैसी कुछ स्थिति हम नहीं देख पा रहे हैं। 1 2 2 for 3 दिख रहा है यहाँ पे। और अब आखिरी गेंद पे तिलक वर्मा स्ट्राइक लेंगे। 26 की रन संख्या पे है, भारत को 38 रन जीत के लिए चाहिए। इसके बाद भी 42 गेंदों का खेल बचा है, तो गेंदें पर्याप्त हैं। विकेट भी भारत के पास 7 विकेट है और इसके बाद संजू का आना बाकी है, तो बल्लेबाजी में गहराई भी थोड़ी दिख रही है। अक्षर पटेल का आना बाकी है। जोसेफ चले, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद पैड लाइंस पे फ्लिक किया गया, इसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, आखिरी गेंद पर 1 रन। 13 ओवर के बाद भारत 123 3 विकेट के नुकसान पे। 7 overs to go. That is 42 balls and India need 37 to win. The DLS power score tells us 95, which is an indication that India are well and truly ahead in the chase, because India currently are 123 for the loss of 3 wickets with 42 balls to go, 37 runs to win. It is the point of discussion, Surya Kumar Yadav, because we were talking about Tilak Varma, we spoke about Ravichandran Ashwin, off spin, left-handed batter, number 4
four that India is looking for in the One Day International World Cup that is coming soon here to be played in India. Who is the option that India have? Does Surya Kumar Yadav fit into the scheme of things in One Day International cricket? In T20 cricket, he is a class apart without a shade of doubt. But in the 50 overs format, who is the batter that India is looking at to bat in the One Day International World Cup to be played here in India in October and November? Short ball pulled away by Tilak Varma. Akhil Hussain starts his new over. Short ball and nicely played in the gap between mid-wicket and square leg. No chance for either of the fielders. Once again, great timing. And one aspect of Tilak Varma's batting is he finds the gap with great ease. और सबसे ये भी बड़ी बात है कि स्पिनर्स के विरुद्ध उनका जो फुटवर्क है वो कमाल का है। और भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी, तो वहां मुझे लगता है तिलक वर्मा बहुत अच्छे ऑप्शन के तौर पे उभर रहे हैं। 4 या 5 किसी नंबर पे भी आप इनको खिला सकते हैं, ऑफ स्पिन का भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। Also, when the T20 World Cup will be played here in the West Indies and in the United States, which is going to be in the next year definitely, but that is also one preparation that India is doing for the T20 World Cup, and for that as well, here is Tilak Varma, who is an interesting prospect, exciting prospect, and as we said, he has been the find of this series. A flighted delivery outside the off stump with the spin, nicely turned away towards mid-wicket by Tilak Varma. He is looking in firm control. He's looking stylish. He's looking in great command and he's batting with great confidence. Even in the Indian Premier League, when he has played for Mumbai Indians the last 2 seasons, a batter who hails from Hyderabad, was played for India in the under-19 format. So he has climbed up the ranks and he comes from Hyderabad, and Hyderabad is known to have stylish batters with the flick of the wrists, and that is where here is a left-hander who comes from Hyderabad and is playing some stylish cricket, attacking cricket, and very, very good positive cricket in the T20 international format. This time a short ball rocks on to the back foot. Here is Hardik Pandya, plays that towards sweeper cover. Will get just a single. Hardik Pandya also will now look to just rotate the strike and ensure that he's at the crease. Some runs in the bank with 2 matches to go in this series. He will also look to score some good runs. But another discussion point is what exactly is the position that Sanju Samson is going to bat in the upcoming T20 internationals, because here once again a short ball pulled away towards square leg by Tilak Varma gets another easy single. He's bowling a little short here. Is Akhil Hussain is bowling his 4th over. A couple of balls did turn and spin away from the right-handed batters, but otherwise the Indian batters, especially Surya Kumar Yadav and Tilak Varma, have negated the spin with some great finesse and good footwork, especially the sweep shots that Tilak Varma has played, the pull shots. Surya Kumar Yadav's scoops have been the call of the day so far. Flighted delivery played towards mid-wicket, no run there for Hardik Pandya. He's batting on 2, Tilak Varma batting on 33. India need 30 to win in 37 balls. The ball is getting a little wet because there's a drizzle. There was a drizzle. Now it is not raining. Very difficult for the bowlers to grip the ball. So that's where Akhil Hussain is just getting the towel back to wipe the ball to ensure that it is in good dry condition. Flighted ball played defensively towards short extra cover. No run there. 14 overs bowled. India 130 for the loss of 3 wickets with 6 overs to go and 30 runs to win for India to get their first victory in this 5-match T20 International Series. भारत के पास अच्छा मौका है और हार्दिक पांड्या को आप देखेंगे तो वो समय भी ले रहे हैं विकेट पर, क्योंकि जानते हैं कि आपको 5 के आसपास 5.5 सवा 5 के रन गति से रन बनाने हैं तो बहुत मुश्किल है नहीं। और जैसा आप जानते हैं कि सिर्फ 30 रन अबॉर्ड चाहिए यहां से, जबकि 6 ओवर का खेल बचा है तो 5 रन पर ओवर से ही बनाने हैं। और 4 ओवर का अभी कोटा खत्म किया वहां अकील हुसैन ने। 4 ओवर में 8 डॉट गेंदें रही, 31 रन दिए उन्होंने और कोई सफलता उन्हें नहीं मिली है इस पारी में। जबकि इससे पहले जो 2 T20 मुकाबले खेले गए थे, 4 ओवर में 29 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए थे एक में, और एक मुकाबले में जो पहला मैच था 4 ओवर में 17 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया था। और अब एक छोर से भी स्पिन बुलाया गया है। रॉस्टन चेस 3 ओवर में 23 रन दे चुके हैं, 1 ओवर उनका बचा है, उसको भी यूज कर लेना चाहते हैं, लेकिन उस तरह की मदद जिस तरह से हमने देखा था भारतीय स्पिनर्स को मिल रही थी वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। वो पिच टूटी नहीं उतना, कहीं उस बारिश ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया।
खलनायक तो नहीं बन गई। इस बीच पहली गेंद के साथ रॉस्टन चेस ओवर द अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और उसे खेला गया। एक रन इस दौरान मिल गया वहां तिलक वर्मा को। इससे पहले कवर से गेंद को फील्ड किया जाए, और अब स्ट्राइक लेंगे हार्दिक पांड्या। उनके लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रॉस्टन चेस। 35 गेंदें बची हैं, 29 रन भारत को बनाने हैं। अब लक्ष्य आसान दिखाई दे रहा है भारत के लिए। जैसा आप जानते हैं, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और उनके कप्तान पॉवेल ने आकर के आखिरी में जो 40-41 रन बनाए, उससे टीम का स्कोर 160 पहुंच गया, और एक वक्त ऐसा लग रहा था ये स्कोर बन नहीं पाएगा। इस बीच अगली गेंद, जिस गेंद को खेला वहां हार्दिक पांड्या ने सुरक्षात्मक तरीके से एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। रॉस्टन चेस तीसरी गेंद के साथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने हार्दिक पांड्या, कोई नजदीक में खिलाड़ी नहीं। इस बीच ये शॉट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड में भटकती हुई गिर करके और लेग स्टंप की ओर जा रही थी, उसे ढकेला वहां, पंच किया लॉन्ग ऑन की दिशा में। इससे पहले गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन बनाने का मौका, और 132 अब भारत 3 विकेट के नुकसान पे। हार्दिक 3 पे पहुंच गए हैं। 6 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया। अब स्ट्राइक लेंगे तिलक वर्मा, उनके लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे रॉस्टन चेस। ये उनका चौथा ओवर है, 3 गेंदें सिर्फ बची हैं। क्या कोई विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को? चेस चले इस बीच ये पैड लाइंस की गेंद, जिसे कलाइयों के सहारे फ्लिक किया गया, तेजी के साथ भाग पड़े, पहला रन पूरा किया, और इससे पहले कि थ्रो वहां पहुंचे, दूसरा रन भी बड़े आराम से इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने। 36 पे पहुंच गए हैं तिलक वर्मा। 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 26 रनों की जरूरत। रॉस्टन चेस और अकील हुसैन कोई भी सफलता नहीं दिला पाया आज, और बहुत उम्मीदें थी इनसे कि कुछ खास करके दिखाएंगे। इस बीच ये 5वीं गेंद ओवर की, जिस गेंद के ठीक पीछे बल्ला लेकर आए, वहां सुरक्षात्मक तरीके से सिर्फ पुश भर कर दिया, और नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर। तिलक वर्मा ने तेजी के साथ भागकर 1 रन पूरा कर लिया, और 1 रन के साथ अब वो 37 पे पहुंच गए। भारत 135 3 विकेट के नुकसान पे। गयाना में अच्छे खासे दर्शक आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए प्रसन्ना, और भारत अब सिर्फ 25 रन दूर है इस पहली जीत के लिए इस सीरीज में। अब आखिरी गेंद के साथ वहां तैयार हो रहे हैं हार्दिक पांड्या, थोड़ा समय लेते हुए। रॉस्टन चेस चले, ये आखिरी गेंद है उनके कोटे की, इस ओवर की भी, और फ्रंट फुट पर आकर अपना बायां पैर आगे निकाला, सुरक्षात्मक तरीके से इस गेंद को पंच किया वहां पर, और इससे पहले कवर पे गेंद को फील्ड किया जाए। रन की कोई संभावना थी नहीं वहां, अपने पाव वापस क्रीज के अंदर खींच लिया। 25 रन दूर है भारत पहली जीत से इस सीरीज में। Yes, Ankit, as you were initiating that discussion, it was just the last ball to go. So in the mid-innings or in the break between the overs, we can definitely discuss. But 25 to win in 30 balls. Now Hardik Pandya is batting on 3 in 7 balls, taking his own time to get those singles. But Surya Kumar Yadav's knock will be the talk of the town. 83 runs in just 44 balls. His partnership with Tilak Varma after India lost both the openers. The debutant Yashasvi Jaiswal could score only 1 run. And then it was Shubman Gill who also had to walk back to the pavilion, couldn't quite contribute a big score, out on 6. India were 34 for 2, chasing 160 on this pitch. It was not going to be easy, but that partnership between Surya Kumar Yadav and Tilak Varma completely turned the tide of this third T20 international. And now with 30 balls to go, that is 5 overs, India need 25 runs to win. A slight injury concern there for Alzari Joseph, just getting his groin stretched and ensuring that he is fit if required to bowl, because he still has 1 over to go. He's bowled 3 overs, has conceded just 19 runs and picked up 2 wickets. He's been the pick of the bowlers as far as the West Indian team is concerned. Tilak Varma now getting ready to face Romario Shepherd. A bowling change because both the spinners have bowled out. Akhil Hussain 4 overs 31 runs, no wickets, and Roston Chase 4 overs 28 runs and no wickets. The wicket taking bowlers, Obed McCoy, who took the wicket of Yashasvi Jaiswal, and Alzari Joseph, who picked up 2 wickets, that of Shubman Gill and the big one of Surya Kumar Yadav, which was a full toss, and Surya Kumar Yadav flicked that straight into the hands of the fielder there at fine leg, and King accepted that. Shepherd, short ball, pulled away by Tilak Varma with great timing. There was a fielder there at deep backward square leg, but he will just watch it sail over his head. That is 6 number 39 of the series, and the first one in this match of Tilak Varma's bat. कमाल की टाइमिंग, 69 मीटर का ये छक्का। वैसे तो शॉट उधर जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो बहुत छोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद
टाइमिंग बहुत कमाल की और लेंथ बहुत अच्छे से पिक किया उन्होंने ऑन साइड में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, ये बढ़िया पुल शॉट. Brilliant batting. 15 boundaries and 5 sixes that the Indian batters have hit. 4 from Surya Kumar Yadav's bat, 1 from Tilak Varma. 15 boundaries, Surya Kumar Yadav. 10 boundaries, Tilak Varma has hit 4. And he's also here mustering up a very, very good score. Can he score his second consecutive half century? This is just his third match in T20 international cricket. But it looks like, Ankit, he has loads and loads of time to hit those shots. And that experience of playing the T20 format in franchise cricket for Mumbai Indians has made him a world of good, and what a player he's turning out to be. बिल्कुल. और जिस तरह से इसी मैदान पर उन्होंने अपना पहला T20 हाफ सेंचुरी लगाया था, तो आज भी मौका है कि वो एक और हाफ सेंचुरी लगाए और इस मैदान को पसंद करें हमेशा. Yes, that's nicely played off his pads towards mid-wicket for an easy single. He moves on to 44 in just 31 balls. Tilak Varma has looked a class apart, has climbed the ranks from Hyderabad, under 19 India, played for Mumbai Indians, now here in the T20 internationals playing for India. Started with a very good knock of 39. He was looking in great control but got out there in the second T20 international, scored a fabulous half century, and third match here as well. He's taking India home to a very, very crucial win, and more than that, what is important here is that he is also inching closer towards a very, very big milestone. 2 consecutive half centuries. Can he get that? And not only is he batting well, but batting with a great strike rate as well. In this series, he's batting with a strike rate of 143. The next best is for Team India. Surya Kumar Yadav is on top with 154, but Tilak Varma 143 strike rate, 2 half centuries is top class batting. This time a slower one. It was Hardik Pandya who wanted to cut that, but it is a ball that is a change of pace and bounces in front of the wicketkeeper. Leading run scorers, Tilak Varma with 134 runs in this series with 2 more matches to go. Nicholas Puran 128 runs, Roman Powell 109, Surya Kumar Yadav with 105 runs. Today he scored 83. So now, with this kind of batting form that the Indian batters have got, it is going to be a very, very strong opposition that Team India will have. Played with soft hands by Hardik Pandya. Good call for an early single. And on the direct hit, they will get an overthrow as well. So what should not have been even a single, they eventually end up getting 2 runs. इसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि तिलक वर्मा तैयार थे कि ओवरथ्रो हो सकता है, क्योंकि वहां कोई बैकअप कर नहीं रहा था. तो हार्दिक ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया. जब पॉइंट पे हार्दिक ने इस गेंद को प्लेस किया था, तिलक वर्मा एकदम तैयार थे कि अगर वहां पे बैकअप कोई नहीं करेगा तो हम दूसरे रन के लिए पलट जाएंगे, और यही हुआ. आराम से वो दूसरा रन पूरा कर गए. Last ball of the 16th over, outside edge, and the third man inside the 30-yard circle. The square third man will not be able to stop that. A lucky boundary, but a boundary nevertheless. 16 overs bowl. India 148 for 3 in firm control of this chase with 12 to win in 4 overs. Hardik Pandya also now in the runs. That will make him feel good with 2 matches to go of this series. Yes, this was a streaky boundary, but he spent time here at the crease along with Tilak Varma. This is a good partnership that is taking India closer to that target of 160. कमाल की बल्लेबाजी, जबकि एक जो इंटेंट है हार्दिक पांड्या में वो दिखाई दे रहा है. रन्स के लिए जा रहे हैं. सूर्य कुमार यादव भी आज रन्स के लिए गए. कप्तानी भी थोड़ी अलग लगी आज. अक्षर पटेल से 4 ओवर कराए. और प्रसन्ना, सबसे दिलचस्प बात तो यही है ना कि भारतीय जो स्पिनर हैं, सबसे पहले अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला. चहल ने 4 ओवर में 33 रन दिए और कुलदीप ने 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए. तो भारतीय स्पिनर्स का ये लेखा जोखा रहा. लेकिन जब आप वेस्टइंडीज के स्पिनर्स की बात करेंगे, अकील हुसैन ने 28 रन दिए और 28 और 31 रॉस्टन चेस और अकील हुसैन ने दिए हैं. तो दोनों के मिलके लगभग 60 रन होते हैं. That has been the difference, because the spinners do not work on this pitch, and that is where India with 3 spinners on this pitch worked really well, Ankit. Akshar Patel, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, even though he may not have picked up a wicket, but he gave good support to the 2 left-arm spinners, which helped India to ensure that after a flying start, they were still in control. And full credit to Kuldeep Yadav, who's carrying on his very good form in white ball cricket. The one-day internationals were very good for him, picked up wickets, and here in the shortest format of international cricket, he's once again proving his class and his mettle.
कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए और अब बल्ला बदला है वहां तिलक वर्मा ने अपना और अब स्ट्राइक लेंगे। जोसेफ को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, वो पूरी तरह से तैयार है अपने चौथे ओवर के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जोसेफ दौड़ना शुरू किया उन्होंने, लेग स्टंप के ऊपर भटकते हुए। देखना है कि क्या वाइड का इशारा आता है या नहीं, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया। गेंद बिल्कुल शरीर के शायद ऊपर से गई है प्रसन्ना। But that was a short ball that Alzarri Joseph has tried, and that is what has been his strong point in this match. He's bowling with great pace and trying to test the Indian batters with that short ball, and that's why today, Ankit, Alzarri Joseph has been the pick of the bowlers as far as West Indian fast bowlers are concerned. तेज गति की गेंदों के लिए जाने जाते हैं अल्जारी जोसेफ। 17वां ओवर चल रहा है, भारत 148, 3 विकेट के नुकसान पे। इस बीच पैड लाइंस की गेंद जिसे कलाइयों के सहारे मोड़ा गया वहां डीप मिड विकेट की तरफ, इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाए चहलकदमी करते हुए बड़े इत्मीनान के साथ। कोई खासा यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि कोई बेचैनी है, फील्डर्स में भी 2 रन भागकर पूरे कर गए वहां तिलक वर्मा और 46 पे खुद का स्कोर लेके गए। चहलकदमी मैं इसलिए बोल रहा था प्रसन्ना, जब आप देखेंगे मिड विकेट पे फील्डर बड़े इत्मीनान के साथ गेंद को जाके उठा रहे थे, जैसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ने अब अपने हथियार खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब शायद वो इस मैच को नहीं जीत पाएंगे। खुद कप्तान ने गेंद को फील्ड किया था। The body language there is reflecting that it has been a tough day for West Indies, but what a day it has been for Team India. Slow one here, safely played, defensively played by Tilak Varma. He is also in that hindsight, he knows that here he is on the verge of a major milestone, 2 consecutive half centuries on the same ground as an Indian playing in West Indies in the shortest format. Brilliant start. बिल्कुल, और ये मौका भी तो अक्सर आपको जीवन में मिलता नहीं है, और आप जानते हैं कि इसके बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप खेलने अगले साल यहां आना है। ये मैदान भी 2007 में वर्ल्ड कप के लिहाज से ही तैयार किया गया था। जोसेफ चले इस बार ये पैड लाइंस पे गेंद यॉर्कर लेन की जिसे कलाइयों के सहारे मोड़ा, इस बार डीप मिड विकेट की तरफ। एक ही रन मिलेगा क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी, दाएं बाएं होती तो दूसरे के लिए कहीं पलट सकते थे। 47 पे पहुंच गए, 35 गेंदों का सामना किया है और अब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक लेंगे 9 की रन संख्या पे। 20 गेंदें बची हैं, सिर्फ 9 रन भारत को जीत के लिए चाहिए। भारत ने अपने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है और 160 बनाने हैं भारत को जीतने के लिए। आज स्पिनर ने साथ नहीं दिया, 2 स्पिनर्स थे मुकाबले में वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया और लगभग 60 रन, जो 8 ओवर का कोटा है उसमें 59 रन दे डाले वो लोग। तो शायद यहीं से मौका मिला भारत को, जैसे प्रसन्ना बता रहे हैं कि स्पिनर्स ने वो जो गैप क्रिएट किया भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, भारत के पास एज मिला और भारतीय टीम बिल्कुल इस वक्त नजदीक जीत के। और सूर्य कुमार यादव की वो 83 रनों की पारी, इस बीच बल्ला हाथ से छूट गया है वहां हार्दिक पांड्या का। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पूरे कंट्रोल में नहीं थे, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, उड़ी हवा में निकल गई और एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर दाएं बाएं घूम रहे थे, गेंद उनके पीछे जाके आगे गिरी। बाद में गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन मौका था इस दौरान 2 रन पूरा करने का। The couple of shots that Hardik Pandya has played, he got a boundary of the outside edge. This time, a leading edge, ball went high up in the air. The fielder not quite able to reach that. He gets 2 runs. So, there's some luck that is working towards Hardik Pandya's favor. He's surviving, but surviving with some kind of luck, with India needing 7 to win in 19 balls. इसके बाद 3 ओवर का खेल बचा है, आखिरी गेंद है जोसेफ की। 2 विकेट अब तक ले चुके हैं, सबसे सफल गेंदबाज वेस्ट इंडीज के। दौड़ना शुरू किया उन्होंने, ओवर द विकेट गेंद और बहुत अच्छा यॉर्कर, बिल्कुल जैसे लगा हार्दिक पांड्या ने खोद के निकाला उस जमीन से, लेग स्टंप की ओर भटकती हुई लाइन पे अच्छा यॉर्कर, टांगों को बिल्कुल फैला दिया हार्दिक ने, किसी तरह से खेला वहां, मिड विकेट की तरफ गेंद गई। 1 रन मिला इस आखिरी गेंद पर। 17 ओवर के बाद भारत 154, 3 विकेट के नुकसान पे। India now needs 6 to win in 3 overs. West Indies, after winning the toss, electing to bat first, scored 159 for 5. King top scoring with 42 in 42 balls, but Roman Powell was the one who provided the push to the West Indian team. Scored a very, very attacking knock of 40 in 19 balls. Mayers started well, gave good support to King, scored 25. Puran also looked good, but Kuldeep Yadav took that big wicket of Puran. He got out on 20. Kuldeep Yadav was definitely the pick of the bowlers, picked up 3 wickets. India chasing 160
60 were at one point of time 34 for 2 with both the openers back in the dugout. But then it was the Surya Kumar Yadav and Tilak Varma show, where Surya Kumar Yadav put up a fabulous display of great T20 batting, scoring 83 runs in 44 balls with 10 boundaries and 4 sixes, and was nicely supported by Tilak Varma. And now it's going to be Rohit Powell who gets ready to bowl a gentle slow one that he bowls. Hardik Pandya once again not quite able to time that ball. The ball goes high up in the air and he gets just a single. With India now 5 to win, तिलक वर्मा needs 3 runs for a half century. बिल्कुल, और ये जरूरत था वहां पे हार्दिक पांड्या को कि 2 रन ना लें और किसी तरह से स्ट्राइक तिलक वर्मा को दें ताकि वो अपने 50 रन पूरे कर पाए. और एक और बात दिलचस्प है ना, पॉवेल गेंदबाजी करते नहीं है. अब तक के T20 करियर में उनके से 5 विकेट हैं. But he's just making one final attempt to see if he can break this partnership and pick up 1 wicket. Once again, a slower one. 1 run taken. Looking for the overthrow. Not to be. 1 run towards extra cover. So that will be just a single. So 2 singles in the over that is number 18th. 4 to win in 16 balls. Hardik Pandya is looking for a big one, or is he looking to just give it back to Tilak Varma, is something that is for us to see. Rohit Powell to bowl right arm over the wicket. The first 2 balls that he has bowled have been gentle, slow ones that he has bowled. This time he bangs the ball into the pitch, a short ball, and just easily played towards mid-wicket for a single. Hardik Pandya gives that strike back to Tilak Varma, who is batting on 48. बिल्कुल, और गेंद में उतनी रफ्तार है नहीं पॉवेल की. बहुत धीमे धीमे आराम से दौड़ के बॉलिंग करने आ रहे हैं. ना तो एक फास्ट बॉलर की तरह से उनका लंबा बॉलिंग रन ऑफ है, ना ही स्पिनर्स की तरह से बहुत नजदीक से भाग कर आ रहे हैं. तो इस तरह का कुछ खास उनकी गेंदबाजी में है नहीं रफ्तार. फिर भी खराब गेंद थी, बहुत ज्यादा छोटी गेंद, फिर भी उसे आराम से टहलाते हुए खेला मिड विकेट की तरफ, और अब स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास. 3 to win for India to get their first win in this series of the inside edge. It'll go towards short fine leg for just a single. So all singles in this 18th over of Rohit Powell. Tilak Varma at the non-striking end, batting on 49. Hardik Pandya batting on 14. Will he take another single here, Ankit? बिल्कुल लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जब शुभमन गिल आउट हुए थे. एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, वहां से उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ की. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूरत यही है हार्दिक पांड्या को कि गैप भी है, आराम से आप सिंगल ले सकते हैं. Another slower one. This time Hardik Pandya hits it over long off for a 6 and a match-winning 6 for Team India, as India win the match by 7 wickets to register their first victory in this 5-match series, and they are well and truly alive. A convincing win here for Team India. A big win by 7 wickets. कमाल की बल्लेबाजी, पहले सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, फिर तिलक वर्मा के बल्ले से, और अब हार्दिक पांड्या ने छक्के के साथ इस मैच को फिनिश किया है. 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद लौटेंगे. तिलक वर्मा 49 की रन संख्या पे नाबाद वापस आएंगे, और भारत ने 7 विकेट से ये मैच जीत लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ. Oh yes, and a captain hitting the winning 6 of another captain. The 7th instance when a captain has hit a winning 6 of another captain. That is where India have won this match by 7 wickets. If we were to just give you a quick summary, West Indies, after winning the toss, electing to bat first, scored 159 for 5, where it was Brendan King 42 that he scored, Kyle Myers 25, Rohit Powell gave a firm push, scored 40, not out in 19 balls. Kuldeep Yadav was the pick of the bowlers. He picked up 3 wickets. India, with a target of 160 to win, lost their openers inside the power play. But Surya Kumar Yadav with a virtually match-winning knock of 83 in 44 balls.